और जनता वेलकम। भाई साहब आज करने वाले हैं टाइनारी की स्टोरी क्वेस्ट। टाइनारी तिगनारी जो भी है, आज होगी उसकी स्टोरी क्वेस्ट प्लस और क्या होगा। हाँ, आज बेसिकली उसकी स्टोरी क्वेस्ट करनी है हमें। ओह, हो जा लोड, हो जा लोड। बहुत स्लो है यार। डिंग 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 डिंग। Inside of my head, I'm still in control. Inside of my head, what you never fake away. Ba ba da ba ba ba. Ding dong ding dong ding dong ding dong. इतनी देर यार, ये मुझे पहले स्टार्ट करके रखनी चाहिए ना। पहले से इसको स्टार्ट कर रखो ताकि सीधा खेलना स्टार्ट कर सकें। इतनी देर तो ये चालू होने में लगा देती गेम। एनीवेज, ओके। फाइन। टेस्ट ऑफ होम। जल्दी से कमीशंस पूरी करूँ। अल्ट्रा हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। आज करेंगे टिग्नारी की स्टोरी क्वेस्ट, कमीशंस वगैरह पूरी करने के बाद और डोमेन्स वगैरह पूरी करने के बाद। आज थोड़ी तबीयत भी ठीक लग रही है, तो आज मेरा एनर्जी लेवल भी थोड़ा ठीक रहेगा।
सबसे बकवास तो मुझे ये वाली क्वेस्ट लगती है, उसके लिए खाना बनाऊँ। पहले मैं जलती हुई आग ढूंढूँ। हो सकता है मेरे पास ये चीज़ पड़ी हो पहले से ही। है क्या? नहीं है। फक। कहाँ जल रही है आग? कहाँ बना सकता हूँ खाना? यहाँ पे कुक कर सकता हूँ? नहीं। ये रहा। ये एडवर्टीजमेंट बोर्ड नहीं। आज टोपी पहन के, हाँ यार आज टोपी पहन के, आज ना बाल थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे। जो भी बच्चे कुचे हैं वो भी अच्छे नहीं लग रहे। प्रियांशु राय हेलो। आओ यार, कल तुम्हें मिस किया हमने, कल तुम थे नहीं यहाँ पे। मॉन्स्टर्ड ग्रिल्ड फिश। यश प्रो, आज मैं प्रो बन गया उल्टी टोपी पहन के और हेडफोन लगा के। आज प्रो वाली फीलिंग आ रही है। ले बहन तू खा, ये ले। ओके दूसरी स्विफ्ट स्लेयर। बीमार था सर, तबीयत सही नहीं थी। अरे क्या हो गया? कहीं वो तो नहीं जो सबको हो रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और सब लोग सोच रहे हैं कि हमें क्या ठंड लगेगी, हम घूमेंगे टी शर्ट पहन के। तो हो सकता है इस वजह से, या कुछ और चीज़ थी। अरे कल क्या कहते हैं, मैंने क्वेस्ट पूरी की, कमीशन क्वेस्ट, और मैं उसके रिवॉर्ड्स लेना भूल गया कैथरीन से। आज नहीं भूलूंगा। नॉट टुडे। टाइम ट्रायल चैलेंज। I'm here. ट्वेंटी प्रीमस बर्बाद वायरल है। हाँ वही आजकल यार सभी को हो रहा है। मैं भी सुबह मॉर्निंग में जाता हूँ ना, ठंड लगती है, लेकिन क्या है ना, मैं वॉक पे जाता हूँ तो बहुत तेज़ हवा, ठंडी हवा चल रही होती है और मैं भी टी शर्ट में निकल जाता हूँ। कल से जैकेट पहनना मुझे भी स्टार्ट करना पड़ेगा। Think you can bully me? Time for retribution! Can't run! Looks like I went too far. Stay right there. No escape. This isn't good. Shaken and stirred. Prepare yourself. सोजित घोष ब्रो, क्या हालचाल? यूई में के लिए आज एक चीज़ मिली। क्या? रस्ट? कह दो रस्ट, कह दो रस्ट मिली। फेलोनियस फ्लोटर्स। यूई में के क्या मिला? रिश्ता। आईडी देख लो, देखता हूँ, एक मिनट कमीशन पूरी करके देखता हूँ। पीछे नहीं, इधर जाना है। यही करना है ना? Lights out. कहाँ है? Time for retribution! छः होते ना? Look at you, boozhound. Yeah.
कंप्लीट। अरे ये रह गया अभी। डीलू की जोजी, ये तो है ही यार। 50 के डीलू इजी और वॉट। हाँ 55 के आ रहा है डीलू पे, देखा। Punishment! Judgment! You can't run! और कौन रह गया? कंप्लीट। हाँ डीलू से सही आता है डैमेज यार, डीलू से मज़ा आता है। डीलू को अगर मेरे को C2 मिल जाए ना तो शायद मैं राइडन का सपना छोड़ दूँ, फिर डीलू को ही बिल्ड करूँ। शायद अगर मुझे डीलू C2 मिल जाता राइडन के मिलने से पहले, या राइडन के बैनर पे मुझे डीलू मिल जाता है, क्योंकि ऐसा भी हुआ है पहले। हाँ लो यार, पहले तुम्हारी योईमिया देखें ज़रा, योईमिया के लिए क्या मिला। योईमिया 86272953। एक मिनट, कहाँ है योईमिया? अरे वाह, यही मिला है ना? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना बात। Increase attack by 20 and grant the might of thunder emblem at stack 1 2 3। बताओ। बहुत बढ़िया। अब इसे करो, रिफाइन करो इसे। कितना सीडी हो गया? 228। ये हुई ना बात। पता था थंडरिंग ही होगा। मैं थोड़ा नीचे सोच रहा था, मैं थोड़ा कम सोच रहा था। मुझे लगा कि अपना वो होगा, क्या कहते हैं, रस्ट वगैरह। लगे हाथ। क्या आयरन चंक दे रहा है? 20 पुल किया, सोचा रस्ट रिफाइनमेंट मिलेगा, 22 पे दे दिया थंडरिंग। यार तुम्हारे अकाउंट पे मैं नहीं, मेरे अकाउंट पे तुम लोग पुल कर लो। वही मुझे लगता है इससे बेस्ट ही मिलेगा। Time for retribution! You can't run! Think you can bully me? Shiver! अभी वैसे मेरा क्या कहता है, रेजर बहुत तगड़ा डैमेज करता है, डीलुक के बराबर है। कभी कभी डीलुक से ज़्यादा भी करता है। देख रहे हो डैमेज। रस R5 भी हो गया, R2 था 20 पुल में 3। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसी चीज़ का तुम स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लेते? अब तुम सोच रहे हो मैं यकीन करूँ इस चीज़ के ऊपर कि तुम्हें 20 पुल में थंडरिंग मिल गई, थंडरिंग पल्स मिल गई, और क्या कहते हैं 3 रस्ट मिल गई। ये तो मजाक यार, कैसे कैसे लोग बात करते हैं। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, क्या कहते हैं, पिक्स और इट डिडंट हैपन। फोटो दिखाओ नहीं तो हम नहीं मान रहे। अब पहले चलें लेने के लिए इसके रिवॉर्ड। कल लेना भूल गया था। एक सेकंड, हाँ डिस्कॉर्ड में शेयर करो, देखता हूँ मैं भी। और वो फोटोशॉप इमेज नहीं होनी चाहिए। पता लगा फोटोशॉप में जाके 3 चिपका दिया आपस में। Add Astra. Thank you for Add Astra. और मेरे ये डिस्पैच कैरेक्टर भी। Pressure, Bennett, Leeway.
हाँ जैसे वो नहीं होता, कुछ लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, फोटोशॉप में इमेजेस बनाकर थंबनेल बनाने के लिए कि देखो मुझे 4 राइडन मिल गई, वो वाला काम नहीं करना। देखें कुछ कमीशंस वगैरह भी हैं कि नहीं है। अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ चलते हैं, ये भाई ईना जुमा वाली बंदी। यार सब्सक्राइबर्स और ना बढ़ नहीं रहे, व्यू भी अच्छे खासे बढ़ नहीं रहे। मुझे लगता है मुझे दिन में काफ़ी बार मल्टीपल टाइम स्ट्रीम करना पड़ेगा। इस वीक की हो गई है, 4 दिन में रिफ़्रेश होगा। हाँ टैलेंट, हाँ सुक्रोस को सेंड करना है ना, उसके लिए चाहिए मुझे ये और ये। हाँ 10 पुल में 10 5 स्टार, हाँ वो वही काम नहीं करना। अब मैं पहले इसका आर्टिफैक्ट ढूंढूं। आर्टिफैक्ट तो फ़िलहाल ठीक नहीं है, पर क्या कर सकते हैं। 298 एलिमेंटल मास्टरी। वेपन भी इसका वो करना है, विडसेथ दिया हुआ मैंने इसे। विडसेथ के अलावा क्या दे सकता हूँ, सोच रहा था ये दे दो, एलिमेंटल मास्टरी थोड़ी तो पड़ेगी। ये अपनी भी एलिमेंटल मास्टरी बढ़ा रहा है, ये वाला जो क्या कहते हैं वेपन है, और अपनी पार्टी मेंबर्स की एलिमेंटल मास्टरी भी बढ़ा रहा है। 7 CR। हाँ कल देखते हैं मेरी वो देख रहे हो क्रिट डैमेज 135, तो सोच रहा हूँ ये दे दूँ। इसमें क्रिट डैमेज है, उसकी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है एलिमेंटल मास्टरी की। और वो कौन सा था सुमेरु का जो वेपन है, वो कौन सा है, उसमें भी तो एलिमेंटल मास्टरी है ना, जो F2P वेपन है सुमेरु का। कहाँ गया सुमेरु सिटी? बाय द वे आज से मैंने अपने डोनेशंस भी स्टार्ट कर दिए, UPI वाली। लेकिन मैंने अभी उनका जो वो होता है, क्या कहते हैं यार, जो नोटिफिकेशन है, उनकी जो नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आती है वो भी एक्टिव नहीं की। वो मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। उसमें EM है ना, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, एक बार जाके देखता हूँ। अगर वो अच्छा लगा मुझे से ज़्यादा तो मैं फिर वो क्राफ्ट करके ये पकड़ा दूंगा सुक्रोस को। लेट्स सी। मुझे उसके सब स्टैट्स नहीं पता, EM के अलावा उसमें वो और क्या बफ कर रहा है। कहाँ है बिल्डर, कहाँ है बिल्डर? अरे ऐसा तो हो रहा। अहंगार, अच्छा ये हो गया ना। कंफर्म ऑप्टाइन ऑप्टाइन, हाँ वो कौन सा था, ये थी फ्रूट ऑफ फुलफिलमेंट। ओके ये क्या है? नहीं यार इसमें EM कहाँ है, इसमें तो एनर्जी रिचार्ज है। EM तो 5 स्टार वाले वेपन में, क्राफ्टेबल वेपन में कहाँ है? ये तो E आ रहा है। लेकिन ये सही है। Obtain the wax and vein effect after the elemental reaction is triggered. Gain 24 elemental mastery while losing 5% attack. For every 0.3 seconds, one stack of max wax and vein can be gained. Max 5 stacks for every 6 seconds that go by without an elemental reaction being triggered. One stack will be lost. अब क्या मैथ करने के लिए दे दी इन्होंने? This effect can be triggered even when the character is off field.
पैसिव में है ना। हाँ दे तो रहा है एलिमेंटल मास्टरी, फ्लैट नहीं दे रहा लेकिन दे रहा है। और कौन कौन से हैं? फ्रॉस्ट वेयर थोड़ी है, फ्रॉस्ट वेयर में अटैक है, हाकुशिन रिंग के अंदर भी ER है। मापा मेयर इसमें है एलिमेंटल मास्टरी, ये दे सकता हूँ यार, ये भी अच्छा है, ये सही है। ट्रिगरिंग एन एलिमेंटल रिएक्शन ग्रांट्स 8% एलिमेंटल डैमेज बोनस फॉर 10 सेकंड्स, मैक्सिमम 2 स्टैक्स, यानी कि 16%। ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ भी एलिमेंटल मास्टरी मिल रही है और यहाँ भी। क्या कहते हो? ये सही लग रहा है यार, मापा मेयर सही लग रहा है ना? सुक्रोज के लिए सही है, कम से कम एलिमेंटल EM यहाँ भी EM दे रहा है और यहाँ भी EM जो है बूस्ट कर रहा है, यही करते हैं। लेकिन ये मेरे पास है, या मैंने बिल्ड किया नहीं किया? एक मिनट देखो ज़रा, वेपन्स स्विच विडसिथ है ये, मापा मेयर मैंने अभी बिल्ड किया ही नहीं है। ओके एक मिनट, चलो उसको बिल्ड करते हैं। ओके मापा मेयर स्टार्ट। और मैं इसको C3 कर सकता हूँ, C2 कर सकता हूँ इसको, R2 सॉरी कर देना चाहिए, या मैं इसको बचा के रखूँ? क्या कहते हो? अगर मैं इसे R2 कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, है ना? क्या कहते हो? R2 करना चाहिए इसके, नहीं करना चाहिए? मैं 2 और बना सकता हूँ ये। हाँ बिले का और कोई काम है नहीं, क्योंकि मुझे और कुछ, और ना तो मैं कोई दूसरा कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ जिस कैरेक्टर को मुझे ये पकड़ाना पड़े, है ना? तो बिले का और कुछ काम है भी नहीं। ये क्या है? वेडनेसडे सैटरडे संडे, ये क्राफ्ट करना पड़ेगा। पीस ऑफ एरोसिडराइट, क्राफ्टिंग का बेंच कहाँ है? वो रहा। है नहीं। पीस ऑफ एरोसिडराइट नहीं है। अरे ये रहा ना, 2 ही तो चाहिए। कर ही देता हूँ इसको मैं। आगे मापा मेयर स्टार्ट 2। वेपन्स एनहेंस, अरे 2 और चाहिए, रिफाइन करो पहले इसको। R2, अच्छा R3 हो सकती है, R3। तो ये हो गई है 12% पे, यानी कि 12 24% एलिमेंटल डैमेज बोनस मिलेगा। सही है। अब इसे सेंड करने के लिए मुझे ये चाहिए, और इसके लिए मुझे ट्रायल ग्राउंड ऑफ थंडर में जाना पड़ेगा।
लेकिन लेकिन ये बहुत अच्छा है क्या? क्या ये मापा मेयर सुक्रोस के लिए मुझे सही लग रहा है क्योंकि एलिमेंटल मास्टरी है. अब बस मुझे ईएम वाले थोड़े वो और मिल जाए. क्या कहते हैं, चैलेंजिंग फीचर्स. मैच एलिमेंटल मास्टरी तो सुक्रोस के लिए काफ़ी अच्छा है ये. अरे तुम्हें भी करना है? एक मिनट, ये वाला डोमेन करके फिर बाहर आता हूँ, फिर तुम ज्वाइन करना. Quake. रेकमेंडेड एलिमेंट स्पायरो. पायरो तो मेरे पास ये है यार. बदल ले यार आल्डुइन. Osmanthus wa. एम्बर मेन. नहीं मेरा 45 नहीं है, छोड़ो. हाँ यार तुम अपना वो बढ़ाओ, वर्ल्ड लेवल बढ़ाओ यार, लेवल बढ़ाओ जल्दी. Bet you can't keep up with me. चल भाई आल्डुइन स्टार्ट कर. अरे बढ़ ही नहीं रहा. कैसे नहीं बढ़ रहा? कॉम्प्लेन पिलाओ. बहुत ही गंदा जोक था. No one escapes my sight. Share my knowledge. Stabilize. Let me amuse myself. This is order. Solidify. Over here. Right you there. Let it rain. Bet you can't keep up with me. Time for retribution. ये स्लाइम्स ना डी लुक की ऑल्ट को बहुत डॉज करती हैं. कौन रह गया भाई? Everyone hold hands. Don't try to rush your enemy. और Must keep training. व्हाट द हेल? यार ये होता है लेवल 60 एम्बर को लेके जब तुम आ जाते हो ना, See everything. और एक भी हीलर नहीं होता टीम के अंदर. बता यार, इनसे ये नहीं मर रही एक. Over here. ये क्या डैमेज है भाई? ये क्या डैमेज है? कमाल है. लीव डोमेन. अभी किसने सब्सक्राइब किया? साजन गेमिंग या साइन गेमिंग? नाम बड़ा छोटा सा आया था स्क्रीन पे यार, पढ़ नहीं पाया. जो भी हो, वेलकम टू द चैनल.
कोऑप मोड से हटो, लीव। कौन है वो जो नाहिदा लेके आया, मुश्किल से 1 के डैमेज कर रहा है? वही अरे वो नाहिदा वाला, और एक दूसरा वो कौन था, एम्बर वाला, लेवल 60 एम्बर। वैसे कुछ कह भी नहीं सकते ना इनको। असेंट, सॉरी, वेपन को असेंड करना है, एनहांस। ओहो, एक बार और जाना पड़ेगा क्राफ्ट करने के लिए। अल्ट्रा ईएम से एलिमेंटल रिएक्शन का डैमेज बढ़ता है। हाँ, जैसे कि आपने फ्रीज़ किया, फ्रीज़ के बाद आपने पायरो यूज़ किया, तो पायरो का कितना डैमेज आएगा वो एलिमेंटल मास्टरी पर डिपेंड करता है। अगर एलिमेंटल मास्टरी कैरेक्टर की अच्छी है तो डैमेज बढ़ेगा, एलिमेंटल मास्टरी नहीं है तो डैमेज कम होगा। एज सिंपल एज दैट। क्या बिल्ड करना था, ये क्राफ्ट, कंफर्म, वेपन, एनहांस, असेंड। अब ये चाहिए एक बिट ऑफ एरोसिड्राइट। ईएम कैसे बढ़ेगा? ईएम वही आर्टिफैक्ट से, सुक्रोज का आर्टिफैक्ट। यार सुक्रोज के बड़ी मुश्किल से 5 सेट वेरिडिसेंट विनेरियर हुआ है, लेकिन इनमें से अभी तक मुझे कहीं पे भी ढंग का ईएम नहीं मिला है। जैसे कि ये है एचपी वाला, इसमें एलिमेंटल मास्टरी मिली है और इसका क्रिट डैमेज बढ़ गया, कोई नहीं। फिर इसमें ईएम मिली, ईएम थोड़ा सा बढ़ा। इसके अंदर क्या चीज़ बढ़ी थी इसके अंदर? नहीं, इसको तो मैंने बढ़ाया ही नहीं अब तक। ओह, अब तक ये 0 पे है। मेरे पास आर्टिफैक्ट्स खत्म हो गए थे। अच्छा हाँ, याद आया। उसके बाद ये लेवल 20, इसमें ईएम बढ़ी, इसमें भी क्रिट डैमेज 31% हो गया। ये गारंटेड विश कभी भी ज़्यादा नहीं देखते, 76 पिट्टी तक आएगा। सायन गेमिंग डोंट टाइप लॉन्ग पैराग्राफ। सायन गेमिंग प्लीज़ चेक। सायन कुछ लंबा सा टाइप करके भेजा था क्या? कुछ छोटे छोटे में मुझे बताओ। लॉन्ग पैराग्राफ करोगे तो ये नाइट बॉट जो है वो कर देता है ब्लॉक। ब्लॉक मतलब कि मैसेज हटा देता है। तो ये था, घड़ी थी, इसमें एनर्जी रिचार्ज था, इसमें मुझे एलिमेंटल मास्टरी नहीं मिली, और ईएम की वजह यहाँ पे क्रिट डैमेज बढ़ गया। फिर आते हैं गॉबलेट में, जो एनिमल डैमेज बोनस था, यहाँ पे जो है क्रिट डैमेज और एलिमेंटल मास्टरी में बराबर बराबर गया। और उसके बाद यहाँ पर एलिमेंटल मास्टरी वाला मुझे मिला, ये तो खैर वो था मेडन्स फेडिंग, लेकिन उसके नीचे मुझे दोबारा कुछ और अच्छा खासा नहीं मिला। आर्टिफैक्ट का नेम क्या है? आर्टिफैक्ट का नेम है विरिडिसेंट वेनेरियर। ये लिखा हुआ है ना, कहाँ गया? ये लिखा हुआ विरिडिसेंट वेनेरियर, और ये आपको मिलेगा यहाँ पे, दिखाता हूँ। उसका नाम है वैली ऑफ रिमेम्बरेंस। ये रही, ठीक है। ये बोरियस है, बोरियस से नीचे आओगे, डॉन बाइनरी से सीधा, और ले लाइन से राइट, ये है वैली ऑफ रिमेम्बरेंस, यहाँ मिलेगा। ठीक है, और एक मिनट, हाँ एक मिनट, अरे क्राफ्ट करना था ना, वेट वेट वेट, इसके लिए पता नहीं कुछ क्राफ्टिंग के लिए मुझे मिलेगा कि नहीं, लगता नहीं। खरीद लूँ इसको मैं शॉप से। केओस सर्किट नहीं चाहिए। अरे यहाँ भी नहीं मिल रहा। शिमरिंग नेक्टर तो मुझे चाहिए, ये ले लूँ, ये तो भी इसमें काम आएगा। स्टडी बोन शार्ड, अच्छा खरीद नहीं सकते, वो जाना ही पड़ेगा, दोबारा से जाना पड़ेगा मुझे। सायन गेमिंग का आईडी चेक करने बोल रहा है। ओके, एक सेकंड। अरे पार्टी इन्फो में नहीं। सायन गेमिंग 854406 534 सर्च।
ओके, एडवेंचर रैंक 47, रैक्स लैपिस आया तो 17,256। यार ये कल भी मैंने एक बार बताया था किसी को, इतने कम क्रिट रेट का कोई फ़ायदा नहीं है अगर क्रिट डैमेज, इतने ज़्यादा क्रिट डैमेज का कोई फ़ायदा नहीं अगर तुम क्रिट ही नहीं कर रहे तो। लिटरली 17% क्रिट रेट का मतलब पता क्या हुआ, अगर तुमने 10 ट्राई किए तो 10 में से 1 या 2 मैक्सिमम क्रिट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा क्रिट रेट बढ़ाओ। वेपन हार्बिंजर ऑफ डॉन, चलो वेपन तो भी इसका तुम्हें फार्म करना पड़ेगा। ग्लैडिएटर्स फिनाले, मतलब तुम्हें इसको अच्छा खासा फार्म करने की ज़रूरत है अभी। आर्टिफैक्ट फार्म करो, वेपन के लिए तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या पी रहा है ये? और अच्छा, तुम्हारी मेन टीम कौन है? बेनेट है, योइमिया है, शानलिंग है, 50+ CR और 200 CD। वही बेसिकली यहाँ पे तुम क्या टीम बना सकते हो? बेनेट के साथ शानलिंग, शिंगचो और सुक्रोस, इसकी टीम बन सकती है। बेनेट शानलिंग तुम्हारी मेन DPS हो गई, ठीक है। बेनेट डैमेज बूस्टर हो गया, सुक्रोस तुम्हारा एलिमेंटल रिएक्शन बढ़ाने के लिए, और शिंगचो शानलिंग के डैमेज को वो करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा वे प्राइस बार बार। शानलिंग को थोड़ा सा करो 50-78, हाँ ये तुम्हारा क्रिट डैमेज बढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पे। एलिमेंटल मास्टरी कार्ड 85 चलेगा। प्राइमोर्डियल जेड स्पीयर, क्या बात है, क्या बात है। तो इसे किया नहीं क्या, लेवल 50 पे? वाह। आर्टिफैक्ट नोबलिस ओब्लाइज C3, हाँ तो इसी को बनाओ, तुम्हारे जो मेन DPS होगा वो इसी को बनाओ, इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। फिर इसका सुक्रोस तुम्हारी C1 है। वेपन कौन सा दिया हुआ है? एमरल्ड ऑर्ब, नहीं वेपन चेंज करो। एलिमेंटल मास्टरी चाहिए बहुत ज़्यादा, इसमें है एलिमेंटल मास्टरी लेकिन फिर भी वेपन थोड़ा चेंज करो। लेवल 50 पे भी अगर 61 एलिमेंटल मास्टरी है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आर्टिफैक्ट वेरी डिसेंट वेनरियर, जैसे मैं दे रहा हूँ वही, ठीक है। शिंगचो C1, नोबलिस इसको दे सकते हो। लायंस रोर, ठीक है, लायंस रोर सही है। योइमिया के क्या हाल है? 56-130, ये सही है, दिस इज़ नाइस। वेपन क्या है योइमिया का? प्रोटोटाइप क्रेसेंट। ग्लैडिएटर्स प्रे फिनाले 18-18, पूरा शिमिनावा कर दो ना। टैलेंट इसको लेके जाओ ऊपर। बाकी ना, इसे भी क्या कहते हैं, बिगिनर्स अकाउंट है, लग जाएगा टाइम होने में। ओके, एलिमेंटल मास्टरी 380 हो गई है, अभी 500 और होनी है, ठीक है। और ये बढ़ाना था ना मुझे, इसको एनहांस करना था, अबे होगा असेंट। चलो थोड़ा और करते हैं। बुरा बनी, क्या हाल है, कहाँ थे? शिंगचू के सैक्रिफिशियल सोर्ड या फिर फवोनियस सोर्ड दो। अब जो आ रहे हो भाई, स्ट्रीम को लाइक कर दो, और क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऊपर डिस्कॉर्ड का लिंक है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और बस ये कमीशंस थोड़ी पूरी होते ही जो टिग्नारी की जो स्टोरी क्वेस्ट है वो करेंगे हम। कहाँ था पता नहीं, पर मैं यूट्यूब में खो गया, यहाँ आ गया। यूट्यूब जगह ही ऐसी है। सायोन गेमिंग, थैंक्स भाई। अरे थैंक्स की क्या बात है यार, इसमें थैंक्स कैसा? माकोटो, अबे हम 2 करेंगे क्या? हम 2 नहीं कर सकते भाई, यहाँ 4 लोगों ने नहीं किया। ओनली 2 ऑफ अस, हम 2 नहीं कर सकते भाई, लेके आओ। पहले सब्सक्राइब है बस जब मैं फ्री होता हूँ तुम ऑफलाइन। मैं वही सोच रहा था यार, आज मुझे आज ही लगा कि मैं जो दिन में वैसे लिमिटेड टाइम के लिए आता हूँ, है ना, बुरा बनी, मैं आऊँ क्या? आ जाओ यार, जिसको आना है आ जाओ फिलहाल।
हाँ तो मैं क्या कर रहा था, हाँ मैं ये सोच रहा था कि मेरे थोड़ा मुझे अपना ऑनलाइन आने का टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे दिन में तो मैं ऑनलाइन होता ही हूँ, पर हो सकता है शाम को भी मैं फिर 8 बजे से लेके ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक मैं फिर ऑनलाइन रहूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, है ना। मैं क्या सोच रहा था कि दिन के अंदर जब मैं आता हूँ, जो ये वाला टाइम होता है, इसमें मैं गेंशिन खेलूँ, जैसे गेंशिन मैं खेल रहा हूँ। और शाम को मैं अपना एक दूसरा चैनल बनाने वाला हूँ जिसमें नॉन गेंशिन गेम्स होंगी, है ना, जो जैसे कि जो प्रॉपर स्टोरी क्वेस्ट वाली गेम्स है, ट्रिपल ए गेम्स, उनको खेल के फिर उनको मैं वहाँ पे दूसरे चैनल पे एज अ वॉर्ड अपलोड करूँ, एडिट करके अच्छे से। ठीक है, इस चैनल पे सिर्फ गेंशिन रहेगा, गेंशिन का कंटेंट। तो उस चैनल पे जो मैं अपलोड करूँगा वो मैं शाम को स्ट्रीम करूँ, है ना। तो ये सोच रहा हूँ। एक्सेप्ट राइडन आया क्या? अरे पार्टी क्वेस्ट नहीं, फ्रेंड्स कुछ नहीं आया ब्रो। संप्रीत दास गुड आफ्टरनून यार, गुड आफ्टरनून। जैसे GTA 5, मैं नहीं GTA 5 नहीं, मैं थोड़ा ना स्टोरी गेम्स में भी इंटरेस्टेड हूँ, है ना। अनचार्टर्ड, हाँ ऐसी गेम्स कि इनको खेला, फिर उनको मैंने डाउनलोड करके उनको एडिट किया और फिर दूसरे चैनल पे, गेमिंग चैनल पे, वहाँ पे अपलोड की वो वीडियो, है ना, गेमिंग वीडियो, लेट्स प्ले टाइप की। ठीक है, तो दिन में गेंशिन, शाम को वो, इस तरीके से। GTA 5 इज़ ओल्ड। एक सच बात बताऊँ, मैंने आज तक GTA 5 नहीं खेली, मेरे पास थी ही नहीं। शेडो ऑफ थंब राइडर डिफेक्टिव एडिशन, थंब राइडर। शेडो ऑफ टूम रेडर खेलनी मेरे पास, शेडो ऑफ मेरे पास टूम रेडर की सारी गेम्स हैं, है ना, तो वो मुझे खेलनी है, उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो सोच रहा हूँ कि उससे स्टार्ट करूँ। जो पहली टूम रेडर आई थी, नए वाला जो वो हुआ था, क्या कहते हैं, रीबूट हुआ था, उसमें जो पहले वाली टूम रेडर थी वहाँ से स्टार्ट करूँ और धीरे 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 सारी फिनिश करूँ। कौन आ रहा है भाई क्लियर करवाने के लिए? कोई आ रहा है तो आओ। फिर टाइनारी की स्टोरी क्वेस्ट भी करनी है। मैं इतने अपना रेजिन जो है कंडेंस करके आता हूँ। नहीं, कंडेंस करने की ज़रूरत नहीं, छोड़ो। बार बार यूट्यूब पे आना पड़ता है देखने के लिए गेम में क्या करना है। टूम रेडर के अंदर हाँ थोड़ी पजल टाइप की गेम होगी ना, पजल्स होंगे उसके अंदर, इसलिए। पर हम ट्राई करेंगे बिना उसके ही। कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं स्टार्ट करूँ इसको? कोई नहीं, मैं 10 सेकंड। बुरा बनी कहाँ गया? वो शायद गेम ऑन कर रहा है अपनी। चलो 2 मिनट और वेट करता हूँ, अगर कोई आ रहा हो तो। यार मैं तो भूल ही जाता हूँ, लीवे आया इतना टाइम हो गया कि लीवे का म्यूज़िक बहुत सही है, इट्स वेरी नाइस। Judgment. आ गया। अरे नहीं था बेबी। किसी और को आना है? एनीवन एल्स? नहीं तो कोई नहीं। कम ऑन, चलो बाहर। अरे हम लोग पे भी ऐसा पावर रहता तो कितना मज़ा आता ना। कौन सा पावर? ये क्या कहते हैं जो ज़मीन पे पटक रहा है अपना हाथ? अरे मैं तो जुर्म ख़त्म कर देता है दिल्ली एनसीआर में से, हाथ ज़मीन पे पटक पटक के। M is trying to enter your world. आ जाओ भाई आ जाओ। मज़ा नहीं आता लेकिन ये दुनिया तबाह हो जाती। मैं तो हर जगह हाथ पटक रहा होता। पेपर में 100 में से 30 नंबर, टीचर के डेस्क पे हाथ पटक दिया।
और कौन राइडन संस्कारी है? चले ओके स्टार्ट। हाँ गेंशिन इम्पैक्ट के कैरेक्टर वाला पावर ना, वही तो कह रहा हूँ, जो कैरेक्टर भी यही तो पावर है उसके पास। वो अपना हाथ ज़मीन पे लाता है, ऐसे पटकता है इलेक्ट्रो में। नाहिदा कहाँ की? नाहिदा कम। There you Be are. still. Share my knowledge. Everyone hold hands. Teamwork is dreamwork. ये होती बात। Cascade. Temple of Wisdom. Verdict is यार इसका बहुत स्लो है। Everybody stand back. be still. Let's light it up. ये होता है ना, इसे कहते हैं डोमेन क्लियर करना। इसे कहते हैं डोमेन क्लियर करना। नाहिदा कहाँ चढ़ गई पेड़ पे? यहीं रहना, जाना मत। कंटिन्यू करूँगा। ऐसे चूज़ करने थोड़ी मिलेगा। हाँ यार विजन तो अपने आप ही आती है। विजन तो अपने आप ही मिलेगी। सॉरी मैं भूल गया, मुझे स्टार्ट करना है। Be still. Share my knowledge. Verdict is Everybody stand back. Yeah. yeah. That's far enough. मेरे से इतने में काम हो जाएगा। इतने में काम हो जाना चाहिए। अपने को करना है क्या? ये क्राफ्ट। सुक्रोस वेपन एनहांस असेंड। अब से लेवल 60 तक, लेवल 70। अब थोड़ा सही लग रहा है। अब 80 बाद में। पहले बेस अटैक 429, एलिमेंटल मास्टरी 91। अब देखें इसका 389 एलिमेंटल मास्टरी। अब थोड़ा इसके जो वो है ना आर्टिफैक्ट्स, वो थोड़े किए जाएं। वैली ऑफ रिमेम्बरेंस, डोमेन्स, आर्टिफैक्ट, ये ना, हाँ वैली ऑफ रिमेम्बरेंस। कौन कौन है, कौन कौन चला गया? संस्कारी दोनों हो ना?
आर्टिफैक्ट्स। अरे ये क्या हो गया? ये तो करना ही नहीं था मुझे। कल फंगाई वाला इवेंट आएगा। आज भी इवेंट तो आज भी है, मैंने पूरा नहीं किया अभी उसको। आज वाला जो है ना वो पूरा नहीं किया, वो भी करता हूँ। मैच अरे कोई आ ही नहीं रहा। तीन से हो जाएगा क्या? कैंसिल करूँ इसको मैं? छोड़ो, को ऑप करते हैं 3 से। संस्कारी कहाँ गया? अरे यहीं पर है। अरे दोनों नाहिदा ही चूज़ कर लोगे तो कैसे काम चलेगा? ये ठीक है। डी लुक स्विच। राइडन निकालने में कितने प्रीमोस लग सकते हैं? कोई आइडिया नहीं भाई, ये तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। अगर ऐसी किस्मत हुई, क्या कहते हैं, किसकी जैसी? अभी किसने दिखाया था अपना अकाउंट? अभी किसने अपना अकाउंट दिखाया था ना? Everyone hold hands. Shake it and stir. Your teamwork is dreamwork. I see everything. Let's light it up. Verdict is ये परेशान करेगी, पहले से ख़त्म किया जाए। Hey, Scratch! Look at you! Help! time I'm for going in. Let's light retribution. it up. I see Yeah. 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 क्लेमोर वाले कभी कभी तो लगते हैं बहुत ज़्यादा स्लो। This is just my. बेनेट लास्ट मोमेंट में मरा जाके। एटलीस्ट 28K प्रीमोस चाहिए भाई, ऐसा मत बोलो। अरे भाई मैं ज़रा फॉर गारंटीड राइडन, बाकी तुम्हारा लक है तो सिर्फ 1600 में मिल सकती है। वही तो मैं एक बार ज़रा रेजिन कंडेंस करके आया, 1 मिनट। नहीं तो ये तो मेरे को बकवास वो देते रहेंगे आर्टिफैक्ट्स। रेजिन कंडेंस रेजिन क्राफ्ट कंफर्म। वैली ऑफ रिमेम्बरेंस टेलीपोर्ट। Go up confirm. कभी 28K हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। 28,000 प्रीमोज इकट्ठे करना, बस थोड़ा सा हाथ खींच के चलना पड़ता है और कुछ नहीं। I'm here. Shake it and stir. Let's play. Think you can get away? Hanisato up. Sweet. Time Brace yourself. for retribution.
Wouldn't gliding be faster? ओ भाई स्किप कर गई. Cascade. Yeah. 28 के 1 साल लगेगा. नहीं नहीं लगेगा 1 साल. बप क्या बकवास सा दिया है. Mind the Look daily. at you, Boo Down. Time for takeoff. Here we go. Wouldn't gliding be faster? Time for retribution. Be still. Cascade. ये होती है डोमेन क्लियर करने की. यार देखो 28,000 प्रीमोज तुम्हें इकट्ठे करने हैं ना. तुम्हें बेसिकली मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता कितना लगेगा, लेकिन तुम्हें अपना हाथ बहुत खींच के चलना पड़ेगा कि कहीं पर उसको ना करो तुम वेस्ट प्रीमोज को अपने. अरे यार रिमेनिंग सी लीव डोमेन. अब ख़त्म. अब मुझे करना है ये इवेंट. ये वाला आज भी आया होगा ना. अच्छा अभी नहीं आया. अगला कब आएगा? अगला कब आएगा वे? टाइम रिमेनिंग 11 days 12 hours. वो तो ठीक है. I keep watch. You leave, you call me. सी स्ट्रॉन्ग बॉक्स से थोड़ा सा देखता हूँ कि अगर कोई ढंग का सा वेरी डिसेंट मिलता है तो. बकवास वाले आर्टिफैक्ट बहुत सारे पड़े हैं, उनको निकाल देता हूँ. हाँ वेरी डिसेंट वाला कहाँ है? ये रहा. ओके बकवास वाले पहले तो ये वेरी डिसेंट वाले निकालता हूँ. बकवास इसमें क्या है? नहीं ये नहीं. इसमें क्या है? ये भी नहीं. हाँ ये निकाल दो. ये निकाल दो. ये निकाल दो. ये निकाल दो. निकालो 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 निकालो. नहीं ये नहीं. ये निकालो. ये निकालो. आई एम बैक. आओ. थैंक यू फॉर द हेल्प. ये निकालो. ये निकालो. डिफेंस वाला एलिमेंटल मास्टरी एनर्जी रिचार्ज. नहीं ये नहीं. ये हो गया. डन. कंफर्म. दे दे भाई कुछ अच्छा दे दे. ओहो अब देखते हैं क्या क्या मिला है. पहले गॉबलेट एलिमेंटल मास्टरी एनर्जी रिचार्ज विद अटैक. ओके अटैक क्रिट रेट पाप बेकार बेकार. डिफेंस एलिमेंटल मास्टरी बेकार. एलिमेंटल मास्टरी क्रिट रेट विद एचपी रख लेता हूँ. कोई नहीं. और देखते हैं. वीवी में ईएम हो तो मत निकालना यार. ईएम ही तो चाहिए और चाहिएगा यहाँ पे. अच्छा मत निकालना मतलब कि उसको वो मत करना, एक्सपेंड मत करना. ठीक है समझ गया. अटैक एलिमेंटल मास्टरी ले लो. एनर्जी रिचार्ज ले ले.
ये तो, अरे ये कैसे है यहाँ पे, ये तो सही है। क्रिट डैमेज एलिमेंटल मास्टरी हटा दो, हटाओ। HP अटैक परसेंटेज वाला हटाओ। अटैक क्रिट डैमेज ये भी हटाओ, ये रख सकते हैं। एनर्जी रिचार्ज क्रिट डैमेज नहीं। एलिमेंटल मास्टरी EM में ही जाता हूँ पहले तो इन्हीं को निपटाओ। अटैक एलिमेंटल मास्टरी एनर्जी रिचार्ज, नोप। डिफेंस वाला ये जाएगा, ये जाएगा, ये अभी रहने देता हूँ उसको। डिफेंस वाला ये ले जाओ। HP VV4 पीस OP। मैं तो सुक्रोज को चिपका डाला, किसी भी CRCD नहीं लिया, ओनली फोकस EM। हाँ वही, सिर्फ मैं एलिमेंटल मास्टरी पे फोकस कर रहा हूँ। मेरे को तो ज़बरदस्ती क्रिट डैमेज मिल रहा है, 135 क्रिट डैमेज है मेरी सुक्रोज का। डिफेंस EM इसे ले लो, अटैक ये वाला ले लो। ओके ये भी कितने घटिया फेदर्स हैं। अरे इलेक्ट्रो डैमेज बोनस, इसमें चाहिए एनिमल डैमेज बोनस, ऑलरेडी है एनिमल डैमेज वाला मेरे पास। बट एलिमेंटल मास्टरी इसको हटा देता हूँ अभी, है ना। 1 मिनट। और फिजिकल डैमेज बोनस कोई काम नहीं है, डिफेंस कोई काम नहीं है, जियो डैमेज बोनस कोई काम नहीं है, HP नोप नोप नोप। चलो इससे करते हैं, एक और दे दूँ, सैंड्स ऑफ ईयन। हाँ ये सही है। मिस्टिक ऑफरिंग 9 आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। 9 कम ऑन, कुछ तो ढंकाओ। अरे बाप रे, अरे 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 भगवान। क्रिट रेट क्रिट डैमेज एलिमेंटल मास्टरी ये रख लेता हूँ। एलिमेंटल मास्टरी वाला सैंड्स विद क्रिट रेट एंड डिफेंस एंड अटैक। चलो ये भी रख लेता हूँ, ये अटैक विद क्रिट रेट डिफेंस। कुछ तो सही मिल रहा है, कुछ तो सही मिल ही रहा है। और ट्राई करते हैं। तो कौन कौन से कर लिया, ये वाला क्रिट रेट एनर्जी रिचार्ज नहीं, डिफेंस क्रिट रेट नहीं, ये नहीं, ऐसे तो बेकार ही मिले थे। एलिमेंटल मास्टरी क्रिट डैमेज, लेकिन इसमें HP है इसके अंदर ना। अटैक नहीं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ओके ये तो सही थे ना। मैं होता तो स्ट्रॉन्ग बॉक्स में नहीं देखता, अपना सपोर्ट का आर्टिफैक्ट लेवल 20 करता। यार मेरे को आर्टिफैक्ट ढंका तो मिले, उसके बाद तो मैं उसको करूँगा ना। अभी तो आर्टिफैक्ट ढंका ही नहीं मिल रहा। एलिमेंटल मास्टरी मेरे को मिल ही नहीं रही है। 300 एलिमेंटल मास्टरी, मुझे कम से कम 800 चाहिए, ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, अब यहाँ चलते हैं। अटैक एनिमल डैमेज बोनस लेकिन बेकार है। क्रायो डैमेज बोनस ये भी बेकार आर्टिफैक्ट है। क्रिट डैमेज एनर्जी रिचार्ज डिफेंस एलिमेंटल मास्टरी नहीं, एनिमल डैमेज बोनस क्रिट रेट नहीं, हाइड्रो एलिमेंटल मास्टरी नहीं, HP एनर्जी रिचार्ज क्रिट रेट नहीं। क्रायो वाला इसको मैं कर सकता हूँ लॉक। प्लूम ऑफ डेथ सपोर्ट में कुछ भी चिपका दो, काम चल जाता है खाली में स्टैट्स डिफ को छोड़ के। हाँ लेकिन क्या कहते हैं, मुझे वेरिडिसेंट वेनरेयर का आर्टिफैक्ट चाहिए ना जिसमें एलिमेंटल मास्टरी हो। अब फिलहाल तो वो नहीं मिल रहा। चिपका दो मैं कुछ भी दूँ, खाली एलिमेंटल मास्टरी ही नहीं बढ़ा रही, जो उसके पैसिव है, सेट की जो पैसिव है वो भी चाहिए। चलो अब मिलेंगे 8 और, देखते हैं क्या मिलता है। पायरो डैमेज बोनस, अरे
ये सही लग रहा है। एनर्जी रिचार्ज नहीं, लॉक कर देना से। हाँ ओके। डिफेंस एलिमेंटल मास्टरी नहीं चाहिए, अटैक क्रिट डैमेज नहीं चाहिए, एचपी एनर्जी रिचार्ज नहीं चाहिए, अटैक एलिमेंटल मास्टरी क्रिट डैमेज। ये फिर भी देख सकता हूँ एक बार कंफर्म। अब देखें सुक्रोस को क्या पकड़ा सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स पहले हमें देखना था। गॉबलेट, हाँ ये प्रॉब्लम है। ये क्या कहते हैं, एनिमल डैमेज बोनस वाला तो मिल गया, लेकिन इसमें ये और पायरो डैमेज बोनस यही सही है जो दिया हुआ है। फेदर, अभी फेदर कौन सा, ये वाला जिसमें एनर्जी रिचार्ज एलिमेंटल मास्टरी 16। नहीं, ये फेदर सही लग रहा है। एलिमेंटल मास्टरी है, एनर्जी रिचार्ज है नहीं, एलिमेंटल मास्टरी क्रिट रेट, ये देख सकता हूँ। स्विच, इसे रोल करता हूँ। I smell rabbit. कोई चार्जिंग पे लगा के गेंशिन खेलता है भाई, चार्जिंग पे लगा के मत खेलना। स्ट्रॉन्ग बॉक्स में गंदा गंदा मिलता है यार, ज़रूरी नहीं है, देखो किस्मत वाली बात है। ये देखो साला डिफेंस बढ़ रहा है इसमें, शाबाश। चार्जिंग में लगा के मत खेलना, तुम्हारा फ़ोन वाकई में ब्लास्ट हो जाएगा। फिर डिफेंस गया। I keep watch. You leave, you call me. अटैक यार, ईएम चाहिए एलिमेंटल मास्टरी में जा भाई। फिर अटैक यार, हाँ। Switch, enhance. Enhance. I'm hungry. Let's hunt. Equip. Enhance. चलिए फिर भी सही है, एलिमेंटल मास्टरी इसमें बढ़ रही है। और डिफेंस ठीक है, ये फिर भी सही है, ये आर्ट फिर भी सही है। कम से कम एलिमेंटल मास्टरी मुझे कुछ तो मिली इसमें। I smell rabbit. 471 देखा, कुछ तो पास आए ना, कुछ तो थोड़ा सा पास आए ना। क्रिट रेट क्रिट डैमेज ऐसे तैसे मुझे होनी चाहिए। एलिमेंटल मास्टरी बढ़ी है फिलहाल तो, ये ज़रूरी है। और एक ये लेवल 20 की एलिमेंटल मास्टरी वाली है। ये थोड़ा सा घटिया हो गया।
जो प्लूम है ना, ये थोड़ा सा कोई किसी और का पकड़ा दूँ क्या? सेट मेरा ब्रेक नहीं होगा, नहीं ब्रेक हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मेडेंस बिलविड दिया हुआ है। शेट। चलो फिलहाल इतना ही काफ़ी है। लेके चलें सुक्रोस को फोरस पेन। अरे क्या खुल रहा है वे? लेट्स टेक सुक्रोस फोरस पेन। देखो सही 400 एलिमेंटल मास्टरी में क्या कर सकती है ये। ओके लेट्स गो। पार्टी सेटअप सुक्रोस स्विच। लेट्स सी क्या होता है। Absorption need to make अबे क्या हुआ? मैंने इसको यार कमाल है यार। मैं विंडरेस गैस लेता ताकि ये जिंदा हो जाए। कमाल ही है। हाँ अब ठीक है चलो। हो रही। हाँ अब आओ। stand clear. Absorption test. ठीक है, नॉट बैड। ठीक है, नॉट बैड। मतलब इट कुड बी बेटर, लेकिन ठीक है। और चलते हैं, और किसको मार सकते हैं? कहाँ जाए? यहाँ चलते हैं। Animal test 6308. Burn! Stand clear. हाँ अब आ रहा है मतलब सुक्रोस को खेलने में। अब थोड़ा सा मज़ा आया। कौन है और कौन है? नीचे है कोई? हाँ वो रहे। यहाँ चलते हैं। Absorption test. Animal test 6308. Enhanced animal module 7. सही है यार, अब मज़ा आ रहा है, अब मज़ा आ रहा है। नाइस। क्या कहते हो, सही लग रही है सुक्रोस अब? अब चलते हैं कहीं और देखते हैं। यहाँ देखते हैं। अब थोड़ी सही लग रही है सुक्रोस मुझे। बस एनर्जी रिचार्ज थोड़ा कम है, बट दैट्स ओके। Stand clear. हाँ एनर्जी रिचार्ज थोड़ा सा कम है। Don't break my glasses. I should sleep on it. कोई नहीं, बाय। सुक्रोस की टीम में लेके, हाँ सुक्रोस की टीम में ले लिया मैंने। हाइपर ब्लूम में सुक्रोस। मेरे पास नाहिदा नहीं है, मैं क्या हाइपर ब्लूम करूँ यार? मेरे पास कोई वो भी नहीं है ज़्यादा।
व्हाट डू यू से होते ना, अरे यार कैरेक्टर डेंड्रो वाला फिलहाल कोई है नहीं। मैं इसलिए खाली अभी सिर्फ सुक्रोस को ही वो कर रहा हूँ जज कि कैसी चल रही है। यहाँ है कोई दुश्मन? अबे कहाँ गायब हो गए? छोड़ो, यहाँ चलते हैं इधर। हाँ ट्रैवलर के साथ फिर मुझे वो भी चाहिए होगा एक, क्या हाइड्रो भी नहीं कोई ढंका सा बना हुआ। यहाँ है कोई? यहाँ तो होगा कोई ना कोई। आए बैठे हुए ना। Absorption test. नाइस। दो इलेक्ट्रो, डेंड्रो ट्रैवलर और सुक्रोस। सुक्रोस के साथ मुझे वो टीम बनानी है, मैंने पहले बताया था मैं राइडन की टीम बनाने वाला हूँ। सुक्रोस और राइडन, लीसा और बेनेट के साथ। यहाँ है कोई नीचे? एनी स्लाइम? ये जब ढूंढो तब कोई मिलता नहीं है लड़ने के लिए। ये रहा। हाँ भाई। Animal test 6308. एक ये भी प्रॉब्लम है। Animal hypostasis emulation. Time for retribution! Stand clear. Absorption test. Yeah. ये क्या ऊपर चढ़ा हुआ है? एनर्जी रिचार्ज थोड़ा सा कम है, बाकी कूल डाउन। Stand clear. अब इसके 112-3 सेकंड हाफ में 100 लेवल का बॉस आता है। दो अच्छे टीम होने चाहिए ना अब इसके लिए। वही तो बस थोड़ा सा मैं और ट्राई कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अपना वही करेंगे। टाइनारी की जो वर्ल्ड क्वेस्ट, जो स्टोरी क्वेस्ट है वो करेंगे। ज़रा हल्का सा मैं सुक्रोस को और ट्राई कर रहा हूँ। इतनी देर लगा के थोड़ा सा तो बिल्ड किया है उसे मैंने। ये नीचे फटू है ना, फटू यहाँ चलते हैं। हाँ भी फटू, क्या हाल है? Enhanced animal module 75. Absorption test. Get back! Freshness overcooked. Disgusting. Judgment. Lights out. Animal test 6308. Absorption test. Animal test 6308. Verdict is...
ठीक है, इनफ टेस्टिंग. अब टाइनारी की वर्ल्ड क्वेस्ट करते हैं. सॉरी, स्टोरी क्वेस्ट. अनलॉक टाइनारी स्टोरी क्वेस्ट. जरा मुंह में कुछ ठूस लूं. कल मैं एक चाइनीज़ या जापानीज के साथ गेम खेल रहा था. मुझको बारबरा लेने को बोला और वो नाहिदा एंड राइडन लेके 1 लाख का डैमेज कर रहा था. उसकी राइडन बनी बिल्ड अच्छी हुई होगी ना Guess we राइडन can rest उसकी. a bit. एक मिनट, टाइनारी के स्टोरी क्वेस्ट है ये. वेट, नहीं ये टाइनारी की थोड़ी है स्टोरी क्वेस्ट. वुल्पस ज़र्डा. I still have a lot to do with the guild. How about you take a rest while I go back? वो कहाँ है टाइनरी की स्टोरी क्वेस्ट कहाँ है? रिटर्न टू क्वेस्ट स्क्रीन टू व्यू क्वेस्ट डिटेल्स. हाँ मैं देख तो रहा हूँ लेकिन है कहाँ? यही है क्या? लॉस इन सैंड्स करना है मुझको? अरे नहीं, तुमको तो करना है. टाइनरी की वर्ल्ड क्वेस्ट कौन सी है? वर्ल्ड क्वेस्ट, कमीशन क्वेस्ट, स्टोरी क्वेस्ट. यहाँ दिखाई नहीं रहा स्टोरी क्वेस्ट कोई. ये क्या हो रहा है भाई? स्टोरी क्वेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा टाइनरी की मुझे? Guess we can rest a bit. अरे को ये तो बताओ ये क्या हो रहा है? लॉस्ट इन सैंड्स है. कैंसिल नेविगेशन भाई. अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं? वो समझ गया, कोऑप मोड में हूँ मैं. ओके, व्हाट अ सिली मिस्टेक. अब आएगी. अरे अभी भी नहीं है. ये रही आ गई. द स्टार्ट ऑफ कंटेमिनेशन. ये रही. चलो. I still have a lot to do. ओके फाइनली. अरे मैं स्टोरी क्वेस्ट के सेक्शन में ही था लेकिन मैं कोऑप मोड में था. कोऑप के अंदर अगर आप हो तो आप स्टोरी क्वेस्ट नहीं कर सकते ना कोऑप में. अब होगा. अब हम करेंगे कैथरीन से बात. उसकी राइडन भी लेवल 90 की थी. Traveler, you've come at a good time. Wait, this sounds like another commission. तो और क्या करने आए यहाँ पे तुम? It is as you say. The commission this time around is of high importance. It pertains to the safety of the Nvidia forest's inhabitants. Huh? What happened? Not long ago, we received word that a section of the Nvidia forest seems to have become contaminated. Contaminated? You mean a new withering zone? I don't know about the specifics,
but I hear that strange things are happening to people who cross through that region. The Avidia Forest inhabitants won't leave their homes so easily. If we allow this contaminated region to expand, the consequences could be unimaginable. That's why I want to ask you to investigate the situation. Even if all you can do is stop the contamination from spreading, that will still save many people. राइडन अच्छा बिल्ड होने पर भी नॉर्मल अटैक 1 लाख नहीं जाता. नॉर्मल अटैक 1 लाख जा रहा था. मुझे लगा उसकी बात कर रहे हो, स्किल की बात. This is forest business. Maybe Tighnari will know something. Let's go find him. वोल्पस सर्डा चैप्टर 1. चलो टाइनारी को ढूंढते हैं. I can do it. The rainforest climate is far more pleasant than that of the desert. Our recent catch was great. We definitely have enough for a grand feast this time. अंदर बैठा हुआ छुप के. This is where you've been, Tighnari? That's... Shh. Keep your voice down. Tighnari, everything's spinning. Am I going to die? Tell Mom that I should have listened to her. And tell Suna that I'm sorry for breaking her toy. I didn't tell her because I was scared that she wouldn't play with me anymore. Tighnari, I heard that people turn into birds after they die. बस कर Is भाई. that true? I feel like I'm getting lighter. What happened? Tighnari, is he? Okay, enough nonsense. You just have a small fever. Take your medication and rest. You'll be bouncing off the walls in no time. Really? Then can you keep the thing about the toy a secret for now? No can do. You're a big kid now. Once you've recovered, go and apologize. Keeping secrets to yourself won't solve anything. टाइनारी लड़की जैसा क्यों दिखता है? बंदा ही लग रहा है. लड़की क्या है? Oh. Hey, let me ask you something. I recall that you're usually pretty healthy. How did you get this sick all of a sudden? I don't know either. Mom's been telling me not to play in the forest. I just wanted to look inside. It's different from before. I got lost and went around in a huge circle. After I got out, I started feeling dizzy. Could it be? So that's how this whole mess happened. Anyway, go rest. No running around until I say so, got it? Traveler, Paimon, let's step out for now. Mr. Forest Watcher, how is my son? I gave him some antipyretics. Let him rest here for a while. I told him that he would feel better after some medicine and rest, but I only said that to comfort him. His symptoms resemble a fever, but something else is causing them. They seem more akin to a disruption in his psyche. Antipyretics won't be of much use. What do we do? Mr. Forest Watcher, you have to help him. If memory serves, a plant called Vasanti grass can help soothe the mind.
A small number grow in arid deserts. They usually look like shriveled weeds, but can be revitalized with a splash of water. They're expensive and unable to grow in the Nvidia forest's climate, so I don't have any on hand. I'll ask the caravans. Go find Kale, have her prepare medicinal tools and a set of traveling gear for me. भाई रोग फोन 2 क्या बात है? रोग फोन 2 अच्छा है. All right. Thank you. Contaminated region, huh? Is that why you two are also here? Uh-huh. Yep. Is it a new withering zone? Doesn't seem like one. Whether you look at scale, internal conditions, or resultant effects, they're completely different. The only thing they have in common is that they aren't welcome. This nuisance made itself home in the Nvidia forest, so I can't turn a blind eye. We feel the same way. All right. Let's contact the caravans first and purchase some Vasanti grass. We can also ask about the contaminated region. There's no time to waste. We have to move quickly. Let's go. फोन तो देखो हीट करेगा ही करेगा. तुम ऐसी गेम खेल रहे हो जो फ़ोन के सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, तो फ़ोन तो हीट मारेगा ही. Mahir. Excuse me. I'd like to purchase some Vasanti grass. Do you have any? I'm sorry, Mr. Forest Watcher, but we've been closed for the past few days. Closed? Now that's odd. It's my first time hearing you say something like that. It's a long story. Some of our goods were stolen recently. रोग भी हीट करता है क्या? करता होगा, लेकिन रोग के अंदर पीछे ना क्या कहते हैं एग्जॉस्ट लगा हुआ है हीट डिस्पेंस करने के लिए, क्योंकि वो गेमिंग फ़ोन है तो. They were mechanical parts that we got from the academia. Although they're old models, they still fetch a good price on the market. Our caravans had to pull together Mora to afford those parts. Now that they've been lost, we'll likely come up short this trip. All the merchants talked it over, and we decided to raise the prices of our remaining inventory. Until this plan takes effect, none of us can privately sell anything. I don't get it. If these goods are so important, then why not think of a way to get them back? Raising prices won't solve anything. At best, you're shoving the consequences of the robbery onto your customers. Mr. Forest Watcher, it's not that we don't want to. It's just the thief disappeared into the deepest parts of the forest. We asked around, and apparently the forest has been very unusual as of late. Anyone who goes in experiences mental anomalies. मैं जा रहा हूँ Amazon पे रोग देखने. We can't keep waiting out देखो here देखो for the महंगा है. thief to come out. All we could do is come up with another solution. So the bandit hid in the contaminated region after stealing those mechanical parts. How many people were there in total? Were they not affected by the contaminated region? That crook came from the contaminated region. As for how many, there weren't any people. No people? Even if I tell you, you might not believe me. Fine. The thief that stole our parts was a huge mechanical crab. What Mechanical the heck? crab? The Nvidia forest has creatures like that? To be honest, I'd rather not think about it. It moved too skillfully to be new at this. It came out of nowhere. Before we could react, it swiped our goods and ran away. We were all shocked. By the time we came to our senses, the thief was already long gone. I see. If we help you retrieve your stolen goods, then business will return to normal? Oh, but of course! Not only that, but you'll become one of our caravan's VIPs on all future purchases of any... Enough. Tell me something that's actually useful. Any leads on that mechanical crab? Maybe one. After our goods were stolen, we specifically got someone to assess the situation. If you're interested, you can go and talk to them. All right.
We'll go and have a word. Okay. Gather information. किसके पास? Abdo. Snapdragon 855 है. Crab is fast, strong, and a pain to deal with. यार देखो तुम एक चीज़ 10 of बताता us हूँ. might not even be able to take that thing head on. देखो उसमें Snapdragon 855 है ना. अभी मेरे ख्याल से रोग का नया वर्जन लॉन्च होने वाला है. तो जब वो लॉन्च आए तो ले लेना. क्योंकि तो 855 है, मेरे पास ये फ़ोन है Xiaomi का 11T Pro. ये फ़ोन में क्या कहते हैं Snapdragon 888 है. ठीक है सोचो. और इसमें 12 GB रैम है इसके अंदर भी. तो रोग का जो नया फ़ोन आएगा उसमें और भी ज़्यादा होगा. थोड़ा वेट करो. Didn't academia ban research on mechanical life forms years ago? Where did that thing come from? Our salaries even got slashed because of it. Who would have thought that that robber wasn't a human but a mechanical crab? 888 हीट प्रॉब्लम. मुझे अब तक तो यार ऐसी कोई हीट प्रॉब्लम इसमें आई नहीं. एज सच अभी कुछ हीट प्रॉब्लम मुझे इसमें आई नहीं. वहाँ पर मैंने इसमें गेमिंग भी इतनी की नहीं. I heard from the caravanners that there have been a lot of robberies lately, but we haven't been affected. We don't normally see the mechanical crab, and it doesn't disturb our daily lives. रोग 6 आ गया. हाँ वही कह रहा हूँ. रोग 6 तो आ गया. It only shows up when the caravans are here, and it runs back to the contaminated region after it's done making a mess. You haven't tried capturing it? We have, but it's too agile and fast. However, we did unexpectedly learn something the last time we tried to capture it. It apparently lives in the deepest part of the forest, so instead of immediately moving its spoils, it first hides them nearby. Oh. Once its stash grows large enough, it moves everything in one go. You'll have to move fast if you want those goods back. Akarsh. After the क्या goods सर were पकड़ के sold, खड़ा I है. made multiple inquiries with nearby caravans and residents. It turns out that many others have also been robbed by that crooked crab. However, the crab only seems to be interested in machinery. It doesn't even bat an eye at other valuables. A caravan carrying a large amount of Mora had an uneventful trip, but another caravan had a child whose metal toy was taken. Oh, wow. Curious. Very curious. Whatever the case, that thing is a scourge. We'll eventually think of a way to get rid of it. iPhone 13 ले लो 70 के मिल रहा है. लेकिन हाँ थोड़ी बड़ी स्क्रीन वाली लेना. छोटी स्क्रीन में मज़ा नहीं आएगा खेलने में. क्या फ़ायदा. How are things? Did you make any progress? बड़ा खुश है We भाई. learned of its behaviors, but much still remains unclear. Assuming normal operational status, mechanical constructs generally act according to their given commands. If I were its owner, I'd command it to steal more valuable things. Or the Mora you made. That would be the most efficient method. But it only goes after mechanical components. This doesn't make any sense. Right. It's really weird. So, you all found a way to retrieve our goods? Do you have any more mechanical parts with you? Yes, I still have a small bag of samples. They weren't taken since I keep them on me at all times. Oh, are you planning to... Yes. Under constant external conditions, organisms rarely initiate changes in their habits. Tighnari Here's what we सुमेरु know का so far. डिटेक्टिव नहीं, It has a सुमेरु का mechanical composition. डॉक्टर. It lives in the contaminated region, and it comes out to steal mechanical components. If we have said components, we can lure it out, capture it, and then make observations for further conclusions. Well, chatting like this won't get us anywhere. We're only wasting time. You're right. We don't have any other options right now. This bag of samples is all yours, Mr. Forest Watcher. If you can get our goods back, the caravans will reward you generously. We don't need anything in return, but I'll be keeping this bag. I may have other uses for it later. We'll also need to borrow a sumpter beast. Our act has to be convincing if we want the crab to fall for it. Oh, yeah, no problem at all. If it means getting our things back, you can even borrow me to do whatever you need.
I'll have to decline that offer. Creepy. Anyway, we'll use the mechanical components and Sumpter Beast to pose as a transiting caravan and lure out the crab. Okay. Once it appears, capture it. I leave the timing to you. Done. We're professionals. Start the caravan. कहाँ है? इनके साथ थोड़ा फंगाई के साथ खेलते हैं थोड़ा. Stand clear. Swirl. Mark. These things useful? डैनी हेलो सर. हेलो 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 यार. आज मैं सोच रहा था यार लोग नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ गए. टाइनारी की वर्ल्ड क्वेस्ट स्टोरी क्वेस्ट चल रही है. Routes and the contaminated region's current perimeter. The goods were likely stolen somewhere around here. Then let's get to it. We'll definitely capture that criminal crab. Okay. We'll start from here and have the Sumpter Beast with the components on board lead the way. This Sumpter Beast isn't familiar with us yet, so be calm and take your time with it. आगे भाग ना जाए. The Sumpter Beast went ahead. Let's keep up with it. चले. चल भाई. Why did it stop? Looks like it's loafing around. Or maybe it's hungry. Don't tell me. खाना खिलाना पड़ेगा इसे. The caravanners grew disheartened after their goods were stolen, so they probably didn't feed their animals as scheduled. Oh bro, अब इसको खाना Let's खिलाओ give it पहले. something to eat. क्या दूँ? अच्छा. मुझे लगा कुकिंग करनी पड़ेगी जाके इसके लिए. All right, it's moving again. ये तो कतई भाग रहा है. ओह. Did you hear something? ये क्रैब थोड़ी है. Is that the mechanical crab the caravan was talking about? It's charging straight at us. It looks strong. Be careful. कहाँ है? Animal test 6308. Absorption test. Yeah. Punishment. Judgment. Animal test 6308. You can't run. Animal hypostasis emulation. ओके चल बहुत हो गया. बाय. मैं सोच रहा था सुक्रोस को ट्राई करूँ थोड़ा. मत मारो सर, बाद में रुला देगी इसकी स्टोरी. Just try to escape this time, you naughty caravan robbing crab. मारना तो पड़ेगा ना. कुलीलू. Hey, playing dumb won't save you. Spill it. Why are you stealing so many mechanical parts? It doesn't seem capable of comprehending complex questions. Keep an eye on it. I'll search around the area for the caravan's goods. I don't know why you're stealing mechanical parts, but they don't belong to you. Stolen items must be returned to their rightful owners. Any objections? You came from the depths of the contaminated region, right? How about you help us with something?
If you take us there, I'll give you some mechanical parts as a reward. Kolu? It reacted. We can't be certain yet. Its excitement may be a simple programmed response upon seeing mechanical components. Okay, so you want the crag to lead us into the contaminated region? That's right. The contaminated region has a large and currently expanding perimeter, so it would be difficult to conduct a thorough search. If we charge straight in, we'll get lost like headless pigeons. Also, our new friend here seems to be full of secrets. I've been studying this contaminated region recently, and I have a hypothesis of my own. So to be absolutely safe, it would be best to have a guide lead the way. Paimon gets it now. Does this scuttler understand what you're saying? It doesn't have to, as long as it isn't hostile towards us. I gave it some components that it will definitely take back to the contaminated region. So long as it doesn't attack us, we can simply follow along. It seems to be really happy. Listen to me. Wait for us here. No running off. We'll be back soon. If you're still here when we return, I'll give you another mechanical part as a reward. Understood? I'm not sure, but our priorities are to retrieve the mechanical components and to purchase Vasanti grass to make medicine with. We should return, but before we do, we need to set up a few traps. Can't have that crab escaping. Okay. इंटरेस्टिंग स्टोरी कुछ तो अलग है स्टोरी में कम से कम Oh! These are the mechanical parts that were stolen! You really got them back for us! Thank you all so very much. I don't know how I can repay you. Wait. Didn't you want to purchase Vasanti grass? ये कुछ हिलीचल की लैंग्वेज लग रही है हिलीचल की नहीं हिलीचल की लैंग्वेज ऐसी होती है मी सामोरी हाँ कातोरू मी सामोरी Don't worry about the price. They're on the house. How many do you need? 2 is enough. No, that won't do. Here, I'll throw in some more. No need. I've already received a reward from you. Reward? You mean that bag of mechanical parts? They aren't worth much compared to this merchandise. But those parts are very useful to me. Just like the Vasanti grass. I retrieved the things you needed, and you gave me what I needed in return. We're even. Oh, and before we go, just a reminder, the forest has an intricate and biodiverse ecosystem. Even if there were no mechanical crabs, other dangers are still present. Take caution on this route. Noted. Thank you all ever so much. Let's return to the village. The earlier we can give the child medicine, the sooner he'll start feeling better. Okay, क्रैब के बाद हम बाद में आएंगे क्रैब के पास हम बाद में आएंगे लगता है अब इसका ओरिजिन क्या है खानरिया यस जितने भी अब इसके लोग हैं वो सारे खानरिया के फॉर्मर सिटीजन्स थे हिलीचल्स भी कुछ अब इसमें चले गए कुछ हिलीचल्स बन गए सैड स्टोरी हिलीचल्स की स्टोरी बड़ी सैड है कहते हैं हिलीचल्स मास्क इसलिए पहनते हैं ताकि उनको कहीं अपना रिफ्लेक्शन न नजर आ जाए अपने असली चेहरे का Traveler and Paimon. Master, I prepared the pharmaceutical equipment. Do you need me to help grind the medicine? No need. A precise dosage is required this time, so I'll do it myself. Oh, okay. But once I'm done, you can deliver the medication to the child. He gets a little nervous when I'm around for too long. I don't think he finds me very approachable. I'll go prepare the medication. Traveler, give me a hand. Is he doing any better? I feel like he's doing a lot better, and his temperature is returning to normal. That's wonderful! Oh yeah, he asked me to tell you that Suna came by earlier, and he told her everything about the toy. Suna didn't get mad,
so we wanted to thank you. It's nothing. Did you prepare the traveling gear I asked you to? Of course I did. Are you going somewhere far away? Yes, we're going to the contaminated region. Judging by its size, we will likely have to stay overnight. I'm leaving everything to you while I'm gone. Huh? But I can't even begin to compare to you. Many things are learned by doing. And once they've been done, you'll realize they weren't as difficult as you once thought they were. Deal with problems as you yourself see fit. You don't have to emulate me. That's right. You'll do great, Kale. All right, then I'll do my best. Master, Traveler, Paimon, take care of yourselves. We'll be all right. You'll understand the reason for this excursion once we arrive at the contaminated region. You put too much confidence in me. Anyway, like you said, things will likely be uneventful. Let's return and find that crab. Crab. Ugh. है क्रैब या गया? नहीं बैठा है. We're here. It should be. नहीं गया, गायब. Where's the crab? Did it secretly scuttle away? ये क्या है पीछे उड़ रहा है हवा में जो? The traps weren't triggered. अच्छा, so traps. it should still be here. Odd. Kuli. Kolu. You honored our agreement and waited here until we returned. As such, I'll hold up my end and give you another mechanical part. Keep it safe. I'm not giving you another one if you lose it. Kolu? Glad you're satisfied. If you want more mechanical parts, take us deeper into the contaminated region. I want to see what happened there. What caused the Nvidia forest to become like this? अच्छा, सुक्रोस मर गई मेरी. पहले सुक्रोस को जिंदा करूं. अब तक सबसे अच्छी स्टोरी क्वेस्ट तो मुझे काजुहा की लगी सो फार, जो मुझे याद है. बाकी मैं स्टोरी क्वेस्ट भूल भी गया हूँ. पुरानी जो मैंने की थी वो स्टोरी क्वेस्ट मेरे दिमाग से निकल भी चुकी हैं थोड़ी बहुत. काजुहा की अच्छी थी, आयातों की अच्छी थी. यहाँ पे कोई लड़ने के लिए? अरे वो तो बहुत दूर है. छोड़ो, वहाँ कौन जाएगा. So this is the contaminated region that everyone's been talking about. Oh, it definitely looks different from normal. It's like really creepy and suffocating. अबिस और फटुई दोनों का मोटिव सेम ही है. दोनों सेलेस्टी के पीछे पड़े हुए हैं. Do you feel unwell at all? Good. It's as I predicted. Elemental power confers a degree of resistance against the contaminated region's influence. How do you know that? I haven't entered the contaminated region for a proper investigation, but I've conducted quite a few controlled experiments. My observations during our time here have all but confirmed my hypothesis. Look at these flowers. How are they different from normal? This flower species is formally known as the Sumeru rose.
but it is also known as the ley line lodestar. Ley line They're lodestar. sensitive to ley lines and emit varying amounts of light in response. Excessive brightness indicates a dangerous level of ley line activity in the surrounding area. From the looks of things, the ley lines around here are already out of control. You're saying the contamination here is coming from ley lines? I can't confirm that right now, but I think that is the case. Let's take another look around and see if we can discover more clues. You know, we haven't seen any animals this entire time. The birds used to chirp really loudly, and there were a lot of foxes. This contaminated region currently appears to have a critical efflux of ley line energy, which is probably the root cause of the patient's cognitive disturbances. Some animals have keen awareness. They sensed something abnormal in this area and fled. Leaky ley lines sure can cause a lot of damage, huh? Like how plants have preferred growth conditions, we also gradually habituate to our surrounding environment. Climate, temperature, humidity, intensity of ley line energies. When people live under fixed conditions, they reach a sort of homeostasis with their environment. ये ले लाइन क्या चीज़ होती है? ले लाइन जो है, जो इरेमिंसल ट्री है, उसकी रूट्स हैं, जो थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हुई है. अभी पीछे नाहिदा की स्टोरी क्वेस्ट में देखा था ना कि ले जो एरिमेंसल ट्री है उसके अंदर पूरे वर्ल्ड की नॉलेज और सारी मेमोरीज हैं. तो ले लाइंस एक तरीके से उसकी रूट्स हैं, वो हैं ले लाइंस. This equilibrium is broken when the surrounding environment abruptly changes, causing people's bodies to react in abnormal ways. If normal fluctuations in temperature occur, then our bodies automatically adjust. However, the average person cannot adapt to changes in ley line energy, and so they fall ill. Then why are we okay? I'm not sure why you are, but he and I are fine because our elemental capabilities allow us to adapt to this kind of change. दोबारा से पाइमॉन के बारे में कुछ. Of course, it's not a good idea to spend too much time in areas with concentrated ley line energy. The only one who can freely traverse this place is probably the mechanical crab. That's about it for the investigation. Help me find an open space. I want to test something. Environment, no wind. Target parameters, normal. Setup complete. Excellent. Looks like it's working. What's this? A purification device that I made. It can absorb excess ley line energy and temporarily stabilize an area. आयुष, आफ्टरनून गुड आफ्टरनून यार. धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइन नहीं होती कि कुछ लोग आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, चले जाते हैं, फिर बाकी दूसरे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे. टाइनारी की स्टोरी क्वेस्ट चल रही है. पाइमॉन सस. हाँ, What a neat thing! Let's set up more and cover the entire region! I wouldn't mind if that would actually work. Unfortunately, once this contamination is present, it isn't something that a few purification devices can fix. The purification devices have their limits. At best, they can only prevent the contaminated region from expanding temporarily. If we want to permanently eradicate the contamination from the ley line effluents, we'll need to tackle the source. That's right. Kolilu? Kolu? Huh? The mechanical crab is acting a little strange. Something's approaching. Oh, Gator. So that's it. Now that the ley line energy has stabilized, the monsters that had left are starting to return. Get rid of them quickly. Don't let them get close to the purification device. No worries. Stand clear. Absorption test. Shabash, Shukros. That's all of them.
अरे वाह वो भी आ गए. Hey! Where are you? Wait for us! Let's hurry and keep up! The mechanical crab went that way! Let's keep up! Help! Help! Burn! Shiver! You can't run! Animal test 6308. Swirl, Mark 2. Spare me! Please spare me! Hey, are you okay? These injuries are superficial. Don't move, I'll patch you up. Who are you all? What happened to those mechanical monsters? Don't worry, we took care of them. Oh, good. That's good. आ गया. It's a monster! Hurry, attack it! How do we explain this? Krabby here isn't a bad guy. It heard you Krabby. shouting for help and brought us here to rescue you. It's faking it. It has to be. Maybe it's gonna partner up with the other mechanical monsters and kill me. Do you know what's inside the forest? It's all crawling with mechanical freaks. I just came here to pick herbs, but I accidentally went into the contaminated region and almost died. I gotta get out of here. Yes. I have to escape. पागल हो गया भाई तो. Be careful. These mechanical life forms are up to no good. It'd be best if you stayed far, far away from them. भाई जसार का जो वॉइस एक्टर है बड़ी मेहनत कर रहा है. No wonder the academia wanted to completely ban the existence of mechanical life forms. Those things should be annihilated. बहुत मेहनत कर रहा है बंदा. His inarticulate speech and bodily tremors indicate psyche disruption. He's been inside the contaminated region for too long. We've purified the ley line energy over there. Follow this path out and you'll soon see the village. भागो. At that point, someone will bring him to Kale for help. I already prepared medication that will return him to normal. So you think you did a good job and want a part as your reward? क्रैब थोड़ी डॉग जैसी हरकतें कर रहा है. It's so hard to understand. Alright, regardless of what you're thinking, you did some real good this time. That's why I'll give you another mechanical part. Need any help with it? ले लाइन एनर्जीज हार्मफुल नहीं है. जब उनके अंदर कोई डिसऑर्डर आ जाता है, जैसे कोई करप्शन आ जाती है ना, तो वो हार्मफुल हो जाती है. वरना ले लाइन्स ऐसे अपने आप में हार्मफुल नहीं है. तुमने देखा होगा हम जिस भी रीजन में जाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ प्यूरिफिकेशन करने की प्यूरिफाई ही कर रहे होते हैं. सुमेरु के अंदर हमने उसको प्यूरिफाई किया, ठीक है. इनाजुमा में हमने उसको प्यूरिफाई किया था, क्या नाम था उसका, सीक्रेट साकुरा, ठीक है. तो इस वर्ल्ड में इस टाइम ये चीज़ चल रही है कि सारी की सारी ले लाइन्स से जो निकली हुई चीज़ें हैं ना, जो सीक्रेट साकुरा ले लाइन से निकला है, ये सारी चीज़ें ये करप्ट हो रही हैं. Guess not. Well, make sure to hang on to it. What was going through your owner's mind when he made you, I wonder? You're like a giant mechanical crab on the outside and a fluffy little hamster on the inside. And also, how do you feel about that person saying that you're as evil as the other mechanical life forms? Okay, it definitely doesn't understand you.
It seems like it possesses limited understanding only towards matters related to mechanical components. Help others to get parts. That's probably its thought process. As for why it, or rather its owner, is collecting so many components, I'm not sure. ये corruption abyss का काम है. Abyss का और फटुई दोनों. It's getting late, so let's set up camp for the night. We'll explore further tomorrow, after a night's rest. Hey, over here! Come on, you big lummox, raise your head and look up! अच्छा. अब भाई तू ऊपर क्यों खड़ा हुआ है? Let's set up camp here. Alright, Hyman also thinks it's a good spot. Oh. Any particular reason? This place is perfect to put up a big tent. We can also set up a cooking pot and cook tons of delicious food. साथ में ingredients लेके घूम रही है. You're not wrong, but the primary reason for choosing this place is because its higher elevation keeps us away from the water vapor below. Rainforests are very wet. You should always be careful when spending the night in damp places. For the next tasks at hand, let's divide and conquer. I'll set up the tent, you'll be in charge of making the fire, and Paimon will forage for edibles nearby. Emergency food. Leave it to Paimon. Paimon's a pro. I'm not expecting that much. Just do what you can. That's right. You can use rushes to start a fire in the wilderness. Their piths are relatively dry and can be readily set aflame. The downside is that they produce a lot of smoke. Traveler, Tighnari, Paimon couldn't find any food. Paimon didn't know that rainforest had so many interesting plants until we came here. They were all sort of weird-looking mushrooms, but Paimon didn't know which ones were edible. Paimon also saw wild berries on the ground, and Paimon was gonna fly over and pick them up, but the dead leaves on top suddenly started moving. It freaked Paimon out. Those were probably dead leaf butterflies. They camouflage as dead leaves to evade predators. My guess is that they mistook you for a bird when you flew over, so they fled. Little did they know that you were more scared than they were. Never mind. The tent's up, so you two go rest. I'll forage for food. Oh, you found some already. Hey! Paimon understands it this time. It wants mechanical parts again. Sorry, no part this time. अरे That task wasn't important enough. If every little thing resulted in a reward, then it might start to take advantage of the system. Yes. I'll note little things like this and give a cumulative reward at a later time. That is one reason. बेचारा. It looks really sad. After some further thought, it might come up with some weird misunderstanding if I don't give it something. All right, here's another for you. I'm off to prepare dinner. We'll take shifts on lookout duty tonight. You two can sleep first. I'll wake you up later. We need lookouts? Yes. Even though most animals fled because of the ley lines, we can't completely let down our guard. It's settled then. I'll set up some pest-repelling devices so poisonous insects don't come crawling into the tent. Have a good night. Not too good, though. वो कहाँ गया हमारा कुलीलू कूलू. चलो रेस्ट करते हैं अंदर. Paimon's getting sleepy. Is this because of the ley lines? It's been a while since we camped outside like this. This is like when we just started adventuring together. Nighty night.
You're awake earlier than I expected. Did you sleep well? Very well. That's good. I was worried that you two wouldn't be able to sleep, so I specially used 2 of my homemade incenses. Don't worry. They're made from all natural ingredients. They have a light fragrance and aren't harmful to the body. Speaking of which, have you seen the crab? Have we seen? भाई हम तो सो रहे थे, जगह तू हुआ है. It was scampering around over there just now, but I don't know where it went. So you can tell. My suspicion is less towards the crab and more directed to its unrevealed owner. A ley line effluence of this magnitude occurred without any warning. Someone probably disrupted the natural flow of the ley lines. Until we fully understand the situation, take extra caution. The academia has banned mechanical lifeform research for years, so the origin of these creatures is very suspect. Topics related to mechanical lifeforms were popular in the Spontama for a time. Some of my juniors had also thrown themselves into such research. They proposed an intriguing idea. Use our knowledge to create a new and practical lifeform that could help humanity conquer nature. However, no matter which modules or parts are installed, a machine is innately a construct that receives and executes commands. They can never possess self-awareness like us or other living organisms. In their pursuit to discover the differences between mechanical and biological life forms, zealous researchers performed unregulated vivisections and other absurdly cruel experiments on animals. Research on mechanical life forms was thus banned. ये इससे तो मुझे उसकी याद आ रही है, फुल मेटल अल्केमिस्ट की. जिसने देखा होगा उसको पता है मैं क्या कह रहा हूँ. The irony is that the researchers became even more impetuous afterward. Who knows? Maybe this subject will be unbanned in a few years. That's a difficult question to answer. I'm interested in the topic of mechanical life, but I don't like the researchers' attitudes. It's just my personal opinion. My ancestors and the Valuka Shuna of the desert coexisted together and supported one another. The bloodline of my people was born from this symbiotic relationship. So to me, all life is important. फुल मेटल मैंने देखा है पूरा, लेकिन नए वाला नहीं, पुराने वाला. नए वाला भी नहीं देखा मैंने पूरा. जो पुराने वाला आया था ना, जो मांगा से थोड़ा सा अलग था. ब्रदरहुड नहीं देखा मैंने अभी तक, लेकिन उसमें बेसिकली जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिएटेड लाइफ, वो कॉन्सेप्ट तो दोनों में सेम है. Life is not an expendable commodity, and knowledge should not be wielded like a scepter. These are the points of contention I have with some researchers, and why I left the academia. By placing yourself above other life forms, what kind of results do you expect to get from researching pure life with impure intentions? Really? Well, I'm glad to hear it. Coffee? Did you prepare this for us? Coffee? All right. Seeing that you're working so hard to help out, I'll give you another part. You're not planning on using it. Many of your own parts are critically degraded, and you're running low on power. All right. Suit yourself. Oh, and thanks for the coffee, but I'm about to go to sleep. Leave it with him. The night watch is yours. Stay safe. थोड़ी इंट्रीगिंग लग रही है. ठीक है, अच्छी है, अच्छी स्टोरी क्वेस्ट है सो फार. टाइनारी का एटीट्यूड थोड़ा सा ना टीचर वाला है, स्ट्रिक्ट टीचर नहीं होते. Sorry. Paimon slept through the entire night. Don't worry. Paimon will be sure to stay awake next time. इनके वर्ल्ड में कॉफ़ी है, मैंने पहली बार देखा. और ईश्वरी हेलो, आ गए. कहाँ थे? Good morning, traveler in Paimon. Quick question. Do you feel off at all? Me too. The farther in we go, the closer we get to the source of the ley line effluence. We'll be heading out earlier today. I'll take down the tent. Asleep? क्यों यार, आज ऑफिस वगैरह नहीं जाना? 9:45 हो गए. Is there something we can do? Good morning. Extinguish our fire so we don't set the entire forest aflame. आज मैं टोपी पहन के बैठा हूँ. Also, Backwards. retrieve the pest repelling devices from last night.
We don't want to affect the ecosystem here. और जो लोग नए आए हैं मैं उन्हें बता दूं, मैंने अब ये डिसाइड किया है, डिसाइड तो खैर क्या किया है, मतलब ये डिसाइड किया कि दिन में मैं जब भी क्या कहते हैं ऑनलाइन आऊँगा तो गेंशिन खेलूँगा, और शाम को दोबारा ऑनलाइन आऊँगा और वहाँ पर दूसरी तरह की गेम्स खेलूँगा, जिनको रिकॉर्ड करके मैं एक अलग चैनल बना के वहाँ पे अपलोड किया करूँगा, जैसे कि शैडो ऑफ द टूम रेडर हो गई और भी दूसरी तरह की स्टोरी गेम्स जो हैं AAA वैसे ही। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब गिव अवे था तब मेरे फॉलोअर्स बहुत जल्दी से बढ़ गए थोड़े से, है ना, लेकिन अब जब गिव अवे वगैरह नहीं चल रहा, नॉर्मल स्ट्रीम चल रही है, तो थोड़ा सा धीमा धीमा माहौल लग रहा है मुझे। तो आई थिंक थोड़ा सा मुझे थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा स्ट्रीम के अंदर। टोपी विल मेक यू लूज हेयर बाय द वे। और कितने लूज करूँगा मैं, मेरा सर टॉप से खाली हो चुका है। All right, let's meet back here later. क्या करना है? Retrieve the pest repelling devices. Collect. Collect. ये पाइमन के लिए क्यों खड़ी है? All right, it's about time to head out. As we go further in, we may encounter more berserk machines. The effects of the ley lines will also increase. If you're struggling, it would be wise to avoid conflict. Try to conserve as much energy as possible until we reach the source of the contamination. If you want to go bald, I don't want to go bald, but I am going bald. I am going bald. काफ़ी ऑलरेडी मेरे बाल जा चुके हैं। जस्ट जोकिंग है नहीं, ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी हो चुका है। Absorption test. Animo test 6308. Verdict is... Stand clear. Animo test 6308. Unexpected up. Stand clear. मरती बहुत जल्दी है यार। अरे मेरा पिंक कितना ज़्यादा आ रहा है, 238 237। बॉल्ड लुक विल सूट यू टू। अरे बॉल्ड, आई वॉज बॉल्ड, मैं एक बार इंटेंशनली बॉल्ड था पहले। मेरी मम्मी ने बोल बोल के मेरा ना बाल बढ़वा दिए दोबारा से, वरना मैं अपना सर शेव करके रखता था प्रॉपर। As I thought, the closer we get to the contamination source, the more mechanical monsters that appear. अरे इतनी दूर कहाँ भाग गया भाई ये? गई सुक्रोस। Time for retribution! Yeah! Punishment! Judgment! वो तो पैदा ही हुए जा रहे हैं। Verdict is... ओके, आ गए फाइनली डोमेन में। सुक्रो सपोर्ट है फील्ड, तो डीलू को रेजर का ही काम है। यस Upon closer inspection, the plants here are really different. Leyline energies are also stronger here. This may be the place we've been looking for. Ready yourselves.
We're going in. डोमेन टाइम, एक मिनट पहले मैं ज़रा ज़िंदा हो जाऊँ अच्छे से, उसके बाद अब देखते हैं। ये कैसा डोमेन है भाई? चलो, ये स्टोरी, ये वर्ल्ड क्वेस्ट है कोई स्टोरी उसकी, टाइनारी की स्टोरी क्वेस्ट। टाइनारी स्टोरी क्वेस्ट। मैं आजकल स्टोरी क्वेस्ट कर रहा हूँ। कल की जो स्टोरी क्वेस्ट थी, कल की जो कौन सी थी, परसों वाली काजुआ वाली, वो कल रात को मैंने डाउनलोड की, फिर उसको एडिट किया। अब मैं उसको इस स्ट्रीम के बाद उसे अपलोड करूँगा चैनल के ऊपर। मुझे उसका थंबनेल बनाना है। Looks like there's no way to sneak by. Let's take care of him quickly. Shiver! Yeah! Animal test 6308. Time for retribution! Ha! Ha! Stand clear. Yeah! Let's nip that in the bud. Huh. Cha. Boom. मन कर रहा है सुक्रोस से खेलने का बार बार। हल तो ज़्यादा से डैमेज कुछ हो नहीं रहा, बट स्टिल सुक्रोस से खेलने का मन कर रहा है। टाइनारी द नर्ड। यस। अबे बच गया क्या? मुझे लगा मर गया। ओह, ये तो कोई डिवाइस है यहाँ पे। What is this? Ley line energy is spilling out from here. This device, it's extracting energy from the ley lines without end. Who in the world would do this without considering the consequences? The ley lines won't be able to repair themselves if their flow is perpetually disrupted like this. ये कहाँ जल्दी मरते हैं? हाँ यार, मुझे लगा मर गया होगा जिस तरीके से डाउन हो गया ना, मुझे लगा गया। इनाजुमा का बंदर मारते मारते दम निकल गया। कौन सा, वो जो पपेट है? Standing here is equivalent to being directly showered in ley line energy, which may cause irreversible damage to your body. Take Paimon and get out of here. I'll see if I can find a way to turn this thing off. Wait, you're also टाइनारी का सिबलिंग मिलेगा यहाँ पे? right? We're staying. We can't leave you here by yourself. Then let's look for it together. If there is no control unit here, then there must be a trapdoor somewhere. You know where it is? Hey, wait for us! Chest. What's this?
It'll only show up if you step on it? Be careful, and watch your step. You going away? Look! Someone's here! Are you the one that's taking the ley line's energy? Turn off that machine now! Why aren't you saying anything? Too ashamed? His body is cold. ये तो VR headset पहन के लेटा हुआ है. It's emaciated, and his eyes are sunken, likely from chronic malnourishment and stress. He collapsed and never got back up. What exactly happened here? Almost forgot about you. Here, this is the last one. What is it doing? I'm not sure. Judging by this room's layout, this place was a laboratory. We should find a repository of research documents if we keep going. He died, बोलो ना. सीधे सीधे नहीं बोलते ना, died. The file room will definitely give us some clues, so let's go take a look. Maybe we can piece together what happened here. Wow! It's huge in here! This place is a natural hiding spot with how hidden it is. The pipes continue further. Did you two find anything? ये बच्चे वो वाले हैं जिनको क्या कहते हैं क्वेश्चन लिखना होता है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में 100 वर्ड्स में लिखना होता है तो बस उसी को एक्सपेंड कर देते हैं. There are a lot of lab notes, but it would take way too long to read through them all. I found a tape recording used for an experiment, and based on its serial number, it's from 2 years ago. Tape recording? Yes, the Spontama created a device that visually records experiments and consolidates the final production into a tape. However, these devices are expensive to make and aren't entirely stable. That's why they are only used in some laboratories and do not see wider usage. 2 words लिखने चाहिए थे. He dead. He dead. D-E-D. He dead. Come on, let's watch. Hold on, let me figure out how to play the tape. There. Ah, okay, this should do it. लो वीडियो कैमरा भी आ गया Genshin में. Kakata? Kakata? Seriously, I look away for 1 second and you're gone? लो इसका नाम है करकाटा. There you are. Look here. This is our new home. I, Abatui, will unleash my talents here and amaze those ancient fossils at the Academia. Abatui. Oh, you're also quite happy. Kakata, do you know what we're about to do? Yes, I thought not. Listen up, Kakata. I'm going to make a mechanical life form that can be mass-produced. The technology will be unlike anything else that exists. I'll use mechanical organs, and electric currents will course through them like blood. A steel-cast heart that will beat forever, and a brain of myriad components that can think like mine. फोटो कैमरा था अभी वीडियो में. वही तो. वेट इज दिस VR गॉगल्स. मैं वही कह रहा हूँ VR गॉगल्स पहन के खड़ा हुआ ये. Inspiration from the ruins and the research that the Academia had banned. I hope everything can start anew from this place. When you can understand our language and live among us, you will no longer be a boring machine, but a truly living being. It's fine. You will understand. One day, you will understand me. Karkata is the mechanical crab, right? And that researcher named Abatui said he wanted to prove something to the Academia? I remember now. I had a junior researcher named Abatui. He was expelled from the Academia for researching mechanical life forms. Junior researcher? Yeah? What's wrong? Nothing. Paimon was just wondering, doesn't Abatui look older than you? He is, but academic progression isn't tied to age. I finished my studies a while ago, so subsequent students generally considered me as their senior. Oh. Overachiever. हर हिंदुस्तानी माँ बाप का सपना. Of course, age can be an issue. For a while, people always dragged me into pictures. I felt like some kind of animal on display. That isn't important. Let's go and see if we can find other tape recordings.
सही बात है, या तो पागल हो रहे हैं या डेड हो रहे हैं. कॉमन चेस्ट. Written on it. Let Paimon see. It's from a half a year ago. That's quite the time gap. I wonder what happened in between. It's rare that you malfunction because of an operational error. Seems that making coffee is still somewhat difficult for you. Or is there an issue with my set parameters? All right, there you go. Water entered the Keela and caused it to short circuit, so it couldn't receive signals from the ganglion. Look at me, talking to you like this. You can't understand me anyway, can you? It's fine. I swapped in some new parts, so you should be all right now. Try moving around. Everything in working order? Be more careful next time. We're tight on money right now, so we don't have a lot of parts or power to spare. इसका कॉफ़ी स्टारबक्स का ऑर्डर रहेगा. अरे मुझे तो लगता है कि इकलौता सिर्फ यही कॉफ़ी बनाने वाला है, क्योंकि मैंने तो आज से पहले इस तेवात के अंदर कॉफ़ी सुना नहीं. तेवात में मिल्क भी मिलता है, पर मुझे पूरे तेवात में आज तक एक बार एक गाय नज़र नहीं आई, तो पता नहीं किसका दूध निकाल रहे हैं ये लोग. मशीनों पिए नहीं. I'm glad. Karkata, did you know? Yesterday, I dreamed that you could talk. Aren't the bunch at the Academia always saying things like, mechanical intelligence is just an extension of statistics? They were blown away when they saw us talking with each other. Too bad it was just a dream. Forget holding a conversation with me. You're so simple that you probably wouldn't even notice if I died. Never mind. I should probably be worrying about next month's power. After Abatui left the Academia, everyone lost contact with him. I thought he was so despondent that he gave up on researching mechanical life forms. Instead, he had holed up here and continued his experiments. Paimon doesn't feel like he's a bad person. He even changed out Karkata's broken parts. Why would he mess with ley lines? Let's keep looking around. अब ट्विस्ट आएगा, देखते हैं क्या ट्विस्ट है. अरे Following the serial numbers, the next recording should be here. The writing is sloppy. Perhaps his state of mind had changed. There's also an undated tape in the wrong spot. Doesn't seem like Abatui put it there. समटर भी इसका मिल्क निकाल रहे होंगे, हो सकता है. पहाड़ों वहाँ पीते हैं ना, पहाड़ों के ऊपर याक का दूध. Maybe Karkata helped him with sorting. It's hard to say. These are the last 2 tape recordings. Let's watch them. Sorry, Karkata. I was just thinking about something. Today might become a special day. In my recent experiments, I successfully gave you a living being's instincts. When you're low on power, or if one of your parts is damaged, you will prioritize your survival command and proactively recharge or replace your parts. So मेरे से मॉन्स्टर बीस्ट मिल्क लेके जाना, क्या ही बिजनेस करें ये लोग. और क्या ना, मतलब मिल्क है. मुझे ना तो पूरे सुमेरु में पूरे तेवात में एक बकरी नज़र आई, ठीक है. कुत्ते बिल्ली के अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे. That is a very dangerous thing. And today, I did something even more dangerous. I've officially activated the 3rd generation ley line extractor. The ley lines will serve as our power source from now on. Conducting research on mechanical life forms requires a large amount of power. Even if I scrimped and saved, the more I have wouldn't last for long.
I'm also getting tired, Karkata. I don't know what's driving me to continue with this research anymore. They say that even if it simulates the operation of a living creature's organs, a machine is still an ice-cold tool. I want to prove them wrong. I want to turn you into a living, breathing, and talking being. I'm not talking about anything cheerful, Karkata. Modules for language, emotion, and movement. I've been working my absolute hardest to augment and refine your functionalities, but I've never seen an effective response. You are my finest success, but even you can't understand me. All you can do is execute limited responses based on preset commands or keywords. Karkata, I wish you could speak to me, even just once. बोल तो रहा है कुलीलू बोल रहा है. Yes. Kuli. You cannot understand me, so you cannot answer me either. It is what it is. In a few days, I'll sell the failed ley line extractor for some more and continue my experiments. Life goes Pinocchio. on, and I have to as well. I don't have any other choice. Pinocchio से ज़्यादा तो इसमें उसकी वाइब्स आ रही हैं Frankenstein वाली. It's alive! If I place another 2 control modules here to simulate the brain's thalamus. Of course my heart decides to act up now. Why did I cut medication from our expenses? Karkata, come help me. Strange. I feel weak. ये खड़ा होकर देखता रहेगा. I have to shut down the extractor. Oh. Shut it off. If we let them recharge indefinitely, they'll go out of control. Right. I never input a command to shut down the extractor, so you don't understand what I'm saying. Tim Burton is going to direct Genshin Impact anime. Tim Burton. In the end, it's just like the academia said. Mechanical life forms only bring danger. My research, was there any point to it at all? सर आप कोई नेम देते तो क्या देते कॉफ़ी मेकर को? कॉफ़ी मेकर को? छोटू. हमारे होते ना चाय वाले छोटू. ए छोटू तो चाय लगा. तो डेली उसको ही बोलता है ए छोटू तो कॉफ़ी दिया. I'm sorry, Karkata. In the end, I still wasn't able to turn you. Bro, नाहिदा को DPS बना लूँ. Mechanical. Go for it. Life form. इस गेम में तुम किसी भी कैरेक्टर को DPS बना So the सकते हो. ley line effluence was an accident. After Abatui's unexpected death, the mechanical monsters were driven by their instincts and continuously drew out power from the ley line extractor. This eventually resulted in severe बस ये damage देखो to उस the ley कैरेक्टर का lines. डैमेज किससे स्केल हो रहा है. ठीक है, कुछ बनाने में आसान होते हैं, कुछ बनाने मुश्किल होते हैं, लेकिन किसी भी कैरेक्टर को तुम DPS में कन्वर्ट कर सकते हो. Paimon understands. Then why didn't Karkata go haywire like the other machines? इससे अच्छा तो टी हाउस जाके कॉफ़ी कैसे बजाते वो सिखा देता. कॉफ़ी कैसे बजाते? कॉफ़ी कौन बजाता है? Because Karkata is different from the other machines. Structures similar to living organisms, the ability to cry and laugh, and capacity for independent thought. To Abatui, only a machine with these features could be considered a mechanical life form. मुझे नहीं लगता है वहाँ पे भी, क्योंकि लीवे के अंदर टी हाउस है और लीवे बेस्ड ऑन चाइना, और चाइना में ज़्यादातर टी चलती है. कॉफ़ी कौन पीता है? I'm gonna make Thoma my main DPS. Perhaps only by building such a machine could he have the Thoma तो गायब हो गया, मैंने तो देखा ही नहीं. attracted research. थोमा तो मैंने देखा ही नहीं भैया, कहाँ गया? ना तो यूज़ करता है, ना किसी क्वेस्ट में नज़र आया है. But if he had slowed down and saw Karkata as a friend instead of an experimental product, he would have noticed. Karkata can't speak. And yet it cares about Abatui far more than it does about itself. करकाटा में बहुत इमोशंस हैं, बट उसका मास्टर रियलाइज नहीं कर पाया. What does that mean?
जब कोई बोलेगा सिर्फ 3 वर्ड्स, काका क्या है, कलुई और कोली और जो भी तू है, कोली को. You'll see in a bit. But before that, we have a more urgent task at hand. तोमा मेरे दिल में है. First, let's find the control unit for the ley line extractor and shut it down. Okay, ley line extractor. अरे ऊपर जाना था क्या? ओहो, नीचे क्यों दिखा रहा था फिर ये? अच्छा हो रहा. Animal test 6308. अरे यार. Ha! Ooh. More of this transparent flooring. ये क्या हो रहा है भाई? ओह, ऐसा क्या? ऊपर जाना है. क्या बढ़िया डोमेन बनाया है. ये तो गोल गोल चल रहा है. Thoma is just like Paimon useless. Useless मत बोलो यार. Thoma बहुत सही बंदा है. अरे कैसे जाएगा ऊपर? तो गोल गोल घूम रहा है. नीचे से क्या रास्ता? नहीं, नीचे से भी नहीं है. थोमा सही बंदा क्यों है? थोमा सही बंदा इसलिए क्योंकि बहुत दिल का बहुत साफ है और क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा हेल्प करता है बिना किसी बात के लोगों की. लेकिन इसे किट कुछ ज़्यादा खास नहीं है. अब चढ़ा है ऊपर, अब चढ़ रहा है ऊपर, अब चढ़ रहा है ऊपर. फाइनली रास्ता मिल गया. और ऊपर बबल बबल बबल. Keep up. Toma is a disappointment. ऐसी बात नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? Toma is not a This is the disappointment. final room. The control unit is likely in there. The way ends here. नीचे आना है क्या? Wanna try jumping down? लेकिन भाई थोमा नहीं होता ना तो हम मर चुके होते. तुम्हें पता नहीं है. राइडन अब तक हमारा One with the forest. कचूमर बना देती. हाँ हाँ, आ जा आ जा आ जा. शाबाश, हवा में घुमाओ, हवा में घुमाओ. Stand clear. मेरी जान है थोमा. यार मत बोलो यार. उसको अच्छा लगता है, तुम्हें नहीं लगता? बात खत्म. Lights out. अरे अनलिमिटेड आ रहे हैं ये तो यार. I kill you. I'll uproot you.
You can't run. Time for retribution. ओ भाई कुछ खा लूँ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सबकी हेल्थ लो है। अब पता लगा कि टीम के अंदर हीलर का होना कितना ज़रूरी है। Absorption test. रेजर का डैमेज है यार, कुछ भी कहो। कौन है? आओ, कौन पूछा? मेरा कॉमेडी पढ़ ले पढ़ा तो अच्छा का। यू हैव ऑल्सो बीन वेरी काइंड एंड हेल्पफुल बेस्टी एंड यू नेवर अ डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा ओ सॉरी, मेरा ध्यान थोड़ा स्क्रीन पे था ना, इसलिए। मेरी जान इसीलिए बिल्ड करना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, वैसे शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। रेजर मिनी साइनो, हाँ हाँ, एक्चुअली रेजर का डिज़ाइन साइनो पे बेस्ड है। साइनो पहले आया था। प्रॉपरली बिल्ड तोमा में गिव 50k डैमेज। तोमा मेरे पास है ही नहीं। तोमा आया, मैंने ट्राई भी नहीं किया तोमा। जब एक बार उसका वो आया था ना, ट्रायल के अंदर आया था, तभी ट्राई किया था, उसके बाद नहीं आया ट्रायल तोमा का। Once we turn it off, the ley line extractor should also shut down. लेकिन डिज़ाइन मामले में सबसे बढ़िया मुझे टाइनारी का डिज़ाइन लगता है। इसकी जो कलर स्कीम है ना, ये बहुत सही है, पीकॉक की तरह। Without an external force damaging the ley lines, they should start to slowly repair themselves. Oh, but I bet you two are more worried about Karkata. Let's head back. हाँ यार, मैकेनिकल कुत्ते को देखना पड़ेगा ना, डॉग को। कहाँ है? ऊपर। चेस। करकाटा। टाइनरी का डिज़ाइन फॉक्स इंस्पायर है। हाँ, लगता तो फॉक्स की तरह है, लेकिन ऐसे रंग बिरंगी फॉक्स मैंने कभी देखी नहीं। वो इसे जिंदा कर देगा ये। अरे अरे यार, ये क्या जिंदा हो गया? तो मर गया बेचारा। शिट। अच्छा, इसलिए मैकेनिकल पार्ट से इकट्ठे कर रहा था ताकि अपने मास्टर को जिंदा कर सके। अरे यार, Karkata has been collecting parts because it thinks doing so will fix its owner? करकाटा को ये लगता है कि मैकेनिकल पार्ट से वो खुद ठीक हो सकता है, तो उसका जो ओनर है वो भी ठीक हो जाएगा। Karkata is unable to understand the concept of death. However, it probably remembers when Abatui replaced its parts when it malfunctioned, and how that restored it to an operational state. It's true that Karkata isn't able to think or understand many topics, but it is like a small child that imitates what adults do. Exactly. So that's why it kept stealing mechanical parts. But it can't repair its owner, no matter how hard it tries. यार, ये अपनी स्टोरी क्वेस्ट जो हैं होयो वाले बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, टचिंग बना रहे हैं। काजुआ की स्टोरी क्वेस्ट भी टचिंग थी, है ना? ये भी। Yes, but the important thing is that it formed the thought of wanting to repair Abatui. कहाँ गई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? यहीं पर है या गई?
No one knows how this thought came to be, but it has even suppressed the instincts that Abatui had installed. Better than cats will eat you if you die. So will dogs. अगर तुम अकेले रहते हो तो कुत्ते भी खा जाएंगे तुम्हें. If it really is as we've predicted, this research truly will make waves in the academia. It might have been possible to achieve this with ancient technology, but no one has been able to do the same with modern tools. Karkata? Karkata? Can you hear Paimon? Tighnari says you're awesome! It reached its limit. It hasn't recharged this entire time. Nor has it replaced its severely damaged parts. It's a miracle that it managed to hang on for so long. I'm going to confirm that the ley line extractor has shut down. Come with me. Let them be alone for a while. Shit. The ley line extractor has ceased operations. Cats will sniff and chomp. हाँ ये तो है. Traces of ley line energy are still in the atmosphere, but the effluence's source has been stopped. The purification devices will handle the rest. Moving on, those affected by the ley lines need immediate care. We'll put up an announcement on the bulletin board about the dangers of entering the contaminated region, and for symptomatic individuals to find Kale. According to the Academia's policies, we need to bring everything back. Research materials related to mechanical life forms will be destroyed, and Karkata will be disassembled and sealed away. What the heck? You two should return first. I'll take care of things here. Although we've stopped the source of the effluence, the ley line energy in the air exceeds normal values. Your bodies won't be able to hold up if you continue to stay here. If you could be one character from Genshin, who would you be? हाँ सोचने दो, कभी सोचा नहीं. एक मिनट. Let's see. One character from Genshin, who would I be? Probably D-Luke. D-Luke शायद. हाँ D-Luke हो सकता हूँ. D-Luke comes to mind. But... Listen, the traveler hasn't rested very well, right? हाँ क्योंकि D-Luke के लिए लड़कियाँ भागती रहती ना. Master D-Luke, oh Master D-Luke. Also, it'll take some time to pack up all the research. छोटी सी जिंदगी है, कुछ तो करके मरो. You're not familiar with this research after all, so you won't be of much use here. Tell the Adventurers Guild that the incident has been resolved, and then get some sleep. We can discuss matters tomorrow. राइडन मॉमी नहीं भागेगी. ना ही दिया. तो D-Luke को फर्क नहीं पड़ता ना. D-Luke is not actively trying to make girls fall in love with him. About mechanical life form research, the better. All right. Then let's go back to Catherine. कल साइनो करना और टचिंग मिलेगी. कल साइनो की या नीलू की है, दोनों में से कोई और है. So I'll see कि किसका होगा. Why are you still? I'll take care of this. Go and Okay, जा रहा हूँ. शायद साइनो से पहले नीलू की स्टोरी क्वेस्ट है. अगर वो हुई तो पहले फिर वो होगी. प्लेइंग हार्ड टू गेट गेम स्ट्रॉन्ग है. हाँ वो तो है. एंड इट वर्क्स. आज रात को मैं ऑनलाइन आऊँगा. मैं गेम खेल रहा था पहले. मेरे चैनल पे तुम्हें उसकी वो भी मिलेगी, क्या कहते हैं, वीडियोस मिलेंगी. लेकिन वो गेम थी टेल मी वाई. स्टोरी बेस्ड गेम है. बहुत अच्छी लगी मुझे, पर मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाया. तो आज रात को आके मैं वो खेलूँगा जब मैं आऊँगा, है ना. आई प्ले दैट गेम और उसको पार्ट्स में खेलूँगा. एवरी नाइट आई प्ले दैट गेम इन पार्ट्स.
क्योंकि मैं फिर इसको दूसरे चैनल पे अपलोड करूँगा, दूसरे चैनल बनाऊँगा ना तो वहाँ अपलोड करूँगा फिर उससे मैं। कितने बजे? मैं सोच रहा हूँ रात को 8 बजे के करीब आऊँगा। हाँ 8 बजे के करीब आऊँगा, फिर 8 से लेके 11 तक मैं स्ट्रीम करूँगा। आई थिंक अब मैं डेली दिन में 2 बार ही क्या करूँगा, दिन में मैं आऊँगा अपना वही 11 बजे मेरा जो टाइम होता है आने का, दिन में 11 साढ़े 11, तब मैं सिर्फ गेंशिन खेलूँगा और रात को आके मैं कोई दूसरी गेम खेलूँगा जो मैं दूसरे चैनल पे जो अपलोड किया करूँगा अलग से बॉट बना के। So the contaminated region turned out to be a ley line Office. affluence deep in the forest. Things are already getting back to normal. क्या करूँ यार, कभी ना कभी होता है, कोई नहीं, लेकिन उसका वार्ड अलग से अपलोड होगा, यू कैन वॉच दैट। 2 बार सही होगा, 2 बार करना पड़ेगा यार, इफ़ आई हैव टू ग्रो माई स्ट्रीम फर्दर, थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि तुम लोग भी नोटिस कर रहे होगे कि बीच में जब गिव अवे वाला टाइम था तब काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा था, अब थोड़ा डाउन हो गया। यू कैन वॉच इट लेटर। हाँ अभी तो कह रहा हूँ, मैं उसको अपलोड करूँगा एडिट करके। I see. Thank you for your hard work. Once the excess ley line energy dissipates from the air, we should be able to make an announcement for residents to resume their normal activities. This is the stipulated reward. Please accept it. चलो फिनिश क्वेस्ट। Is Karkata going to be sent back to the academia? गिव अवे के लिए सब आ जाएंगे फ्री स्टफ, वो तो है। देखो गिव अवे इज़ नॉट द करेक्ट वे टू इंक्रीज योर फॉलोइंग, सबसे सही बात है, ठीक है। गिव अवे का बस ये रहता है कि आप अपने माइलस्टोन्स जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हो। 100 वाज द फर्स्ट माइलस्टोन, नेक्स्ट माइलस्टोन 500 है, फिर उसका अगला माइलस्टोन 1000 सब्सक्राइबर्स का होगा। तो ये धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं, ये आप एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो एंड यू आर गिविंग बैक द पीपल। लोग आपको आके आपका टाइम दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, लोग आपको आके क्या कहते हैं हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, जैसे आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा भी बनता है कि यार अगर मैं जैसे माइलस्टोन्स अचीव करता हूँ, मैं धीरे धीरे गिव बैक करूँ कम्युनिटी को, और क्या। It's already damaged, but Paimon feels sad thinking about it getting disassembled. मुझे तो सोच के बड़ा अजीब लगता है, जब तक ये गेम ख़त्म होगी ना क्या कहते हैं गेंशिन इम्पैक्ट का जब तक वो आएगा, क्या कहते हैं उसको, एपिलॉग आएगा, तब तक मैं 40 साल का हो चुका हूँगा। तुम सबकी शादियाँ हो चुकी होंगी जब तक इसका एपिलॉग आएगा। Oh, then how about we find Tighnari tomorrow and ask him not to do that? थैंक यू। मेरा स्टार्टिंग से था कि मैं अपनी स्ट्रीम्स को थोड़ा सा क्लीन रखूं, ताकि लोग अपने मतलब किसी को फैमिली मेम्बर को भी देखना हो, मेरी ना होगी, हम तो सिंगल ही मरेंगे। देखो मैं 33 का हूँ अभी, ठीक है, 33 ईयर्स ओल्ड, और ये गेम कम से कम 5-6 साल तो चलेगी अभी आगे। 5 साल तो कहीं नहीं गई गेम, बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, भी आएंगे। Paimon really wants to go right now, but Tighnari said that we would discuss matters tomorrow. We'll probably make him mad if we go now, huh? और अगर ये गेम नहीं भी रही तो कुछ ना कुछ तो खेलेंगे ही ना, ज़रूरी थोड़ी है। Alright then, we'll find Tighnari tomorrow and tell him not to disassemble Karkata. आपकी शादी में बुला लेना, मेरी शादी हो तो सही, यहाँ तो सारी चीज़ों के लाले पड़े हुए हैं। मुझे लगता है तुम्हारा पता नहीं, मैं ज़रूर सिंगल मर जाऊँगा एक दिन, होपफुली नॉट, टच वुड। अभी भी फ़ोन के अंदर बम्बल इंस्टॉल्ड है, जब तक फ़ोन में बम्बल इंस्टॉल है तब तक उम्मीद बंधी हुई है। कहाँ जाना है? वेट टिल 8 नेक्स्ट डे। हम जो लोग जब भांगड़ा नचाएंगे। अरे गेम हैंग हो गई क्या? ये क्या हुआ? अच्छा आ गई, मुझे लगा गेम हैंग हो गई। अभी से कोर्ट के चक्कर, 6 महीने में शादी के बाद। बड़ा स्कैम है मेरे दोस्त के साथ, अभी से कोर्ट। हाँ यार, एज ए वेडिंग फोटोग्राफर मैंने इतनी शादियाँ देख ली टूटते हुए। बचपन के दोस्त, ऐसी ऐसी शादियाँ जो हैं साल भर नहीं चल पाई। ओहो, तो नो वंडर आजकल बहुत लोगों को लगता है खाओ पियो मस्त रहो, क्या ज़रूरत है शादी करने की।
वो भी है, लेकिन ठीक है, फैमिली वगैरह का भी प्रेशर पड़ता ही है, कितना ही तुम मना करोगे. How are you feeling? Sleep well? So many local specialties. We should go find Tighnari. पेट पालो, बच्चा अडॉप्ट कर लो, खुश रहो. हाँ वो भी है. डेटिंग शीटिंग करो, शादी कौन ही करे. स्टार्टिंग में लगता है, हाँ हर किसी की अपनी अपनी वो है फिलॉसफी. आई एम अ होपलेस रोमांटिक इन हार्ट, तो मुझे थोड़ा सा है. ये उस कर्टाका को यहाँ ले आया होगा. Keep your voice down. The lilac daphne, a daphne of the genus Thymilaceae, has a strong anticonvulsant effect. Can be made into an anesthetic powder. Extrapolating from these two datasets, it would be particularly potent against Piscine species. Hey, make sure you're getting all this down. कैसे शादी करोगे फिर? देखी जाएगी कैसे करेंगे शादी. करकाटा, हाँ देखा, ये इसका अभी इसका असिस्टेंट बन गया. I thought I told you all to keep your voices low. Plants aren't afraid of noise, but your shouting is making my ears ring. You didn't disassemble Karkata? बेस्ट है, गेम खेलो, चिल करो. वो तो अभी भी कर रहा हूँ, पर उससे जिंदगी नहीं चलती ना यार. Why would I do that? There are a lot more things a guy needs. But Paimon thought you said, according to the Academia's policies. So that's why you two barged in like barbarians at this hour. बड़ा ही मुंह Fine. फटा यार. I suppose I wasn't clear enough about this yesterday. What I meant was, according to the Academia's policies, all products of research must be destroyed. That's why we can't let the Academia discover that place. Anyway, the first thing I did was repair Karkata. During my time at the Academia, I took an elective course at the Spantama. Who knew it would prove useful one day? We then buried Abatui together. पाइमॉन सबको इरिटेट कर देती है. After organizing the research materials, I kept some as a souvenir. Most of it was burned to hide the evidence. I'm not with the Academia, so what do their policies have to do with me? On the other hand, I am the forest watcher of the Nvidia forest. I have a duty to protect all life in the forest. All life brought forth in this world has meaning, and Karkata is no exception. If it exists, then it shouldn't be carelessly abandoned or destroyed. तोमा जैसा लड़का जिस दिन मिला उस दिन ही शादी के कार्ड छपेंगे मेरे. तोमा जैसा से मतलब क्या है? तोमा जैसी लुक्स वाला या तोमा जैसे नेचर वाला या दोनों चीज़ें मिक्स? बस निंगवांग जैसे पैसे चाहिए. That's great! Wait, you just said life form. You recognize Karkata as a true living being now? तोमा जैसे नेचर वाला वो तो मिल जाएंगे. तोमा जैसे नेचर वाले तो बहुत लड़के हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, पर नेचर वाले बहुत लड़के हैं. तोमा जैसे लुक्स वाला देखा जाएगा कि मिलता कि नहीं मिलता. Exists is all. It's hard to explain Karkata's efforts to repair Abatui. Abatui only left behind a small portion of his research. Who knows how many commands he installed? हट, मुझे नहीं मिला आज तक, तो तुमने देखा नहीं लगता ध्यान से. Maybe a conflict between all those commands resulted in this sort of behavior. From a more rigorous perspective, it is impossible to conclude that Karkata is a real life form. But the possibility exists. I am willing to believe in that. सारे लड़के दिल तोड़ के गए हैं अब तक, तो फिर वो थोमा जैसे नहीं हुए ना. फिर तो थोमा तो दिल तोड़ेगा ही नहीं. यही तो बात है. अगर दिल तोड़ के गए हैं इसका मतलब यू आर रॉन्ग इन जजिंग दैट दे आर लाइक तोमा. तोमा जैसे लड़कों को मौका ही नहीं देता. ये तो प्रॉब्लम है. उनको तभी तो बेचारा इतनी दूर अपने घर से इनाज़ूम आया और वहाँ पे भी हाउसमेट बन के घूम रहा है. By the way, I'm not interested in continuing research on this subject. I'm just letting it hang out here because this place is relatively secluded. वैसे भी घर बैठे बैठे थोड़ी ना थोमा मिलेगा, ये तो है. उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी. जैसे कि मैंने उसके लिए बम्बल इंस्टॉल किया हुआ है फ़ोन में अपने. But as things stand now,
it wouldn't be a bad idea to make it my research assistant. At the very least, it can record my experiments. What do you think? बताओ कालू बोल रहा है. That's racist. Complete. सबसे ज़्यादा मुश्किल अब पता क्या होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर, मतलब कि अब क्या होगा, मैं इस पूरी वीडियो को डाउनलोड करूँगा, ठीक है, यूट्यूब से, और फिर जितनी लंबी क्वेस्ट थी उतनी लंबी क्वेस्ट बैठ के देखूँगा सारी की सारी, बीच के सारे पार्ट्स को हटाऊँगा और उसके बाद जाके फिर अपलोड करूँगा. ठरक चारों ओर फैली हुई है. यू आर नॉट अ गैल ऑन डेटिंग ऐप्स. हाँ, आई एम नॉट अ गर्ल ऑन डेटिंग ऐप्स. आई नो, मुझे पता है लड़कियों का क्या है. मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ ऑन डेटिंग ऐप. When people at the academia included me in a और group उसका एक्सपीरियंस मुझे अच्छे से पता they है. would also send me a copy. I'm just saying, look hard. तोमा जैसे बंदे मिल जाएंगे पास, and just give them a chance. I have zero interest in group photos, but I also wouldn't just throw them away. I stored them all in a box. After coming back yesterday, I looked through them and found one with Abatui. I gave it to Karkata, and it seemed happy. सबको चाहिए जोंगली, तोमा को कौन देखता है? ये बोली ना बात. सबको चाहिए जोंगली या शाओ जैसे ईमो टाइप के लड़के. तोमा को कौन देखता है? ये तो बात सही है यार. अर्ली फोटो. अरे फोटो ये किसके साथ है? अरे अच्छा, टाइनारी की ग्रुप फोटोज लेते थे. गेमर्स एनिमे के ड्रामा इन्हें होप्स अप कर रखे हैं. आए हाय. हाँ हाँ, और क्या. नहीं देखना चाहिए ना. इससे बात करते हैं करकाटा से. ये तो यार मुझे कालू बोल रहा है. सो रेसिस्ट. ओह ये है एबटुई. नाइस. पादी सारे इकट्ठे कर लूँ. आ ही गया हूँ यहाँ तो. और ये क्वेस्ट फिनिश. रेसिस्ट करकाटा. कालू कालू बोल रहा है यार. और क्या समझाओ इसे कोई. कॉमिक कॉन में मिलेगा यार. कभी कॉमिक कॉन होगा ना यार दिल्ली के अंदर या कभी बीच में, तो वहाँ पे मिलेंगे हम सब. मिलके देखेंगे कॉमिक कॉन में. ओके, तो यार मेरे ख्याल से अभी के लिए तो इतना ही. अब मैं आऊँगा शाम को दोबारा से ऑनलाइन, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से ये रहेगा कि यहाँ पर आए, यहाँ पे जो भी स्टोरी क्वेस्ट है, वर्ल्ड क्वेस्ट है, दिन में वो की और शाम को दूसरी गेम खेलेंगे, है ना. अब कौन सी स्टोरी क्वेस्ट बची है मैं देखूँ ज़रा. स्टोरी क्वेस्ट अब है साइनो की. अच्छा साइनो की है, उसके बाद नीलू की है, उसके नाइदा की. हाँ ओके बाय बाय. हम चले सोने फिर से. अरे ऑफिस मिस हो जाएगा भाई. अभी कहाँ से चले सोने. 2:45 हो गए. 2:40. गेंशिन हैक कैसे करते हैं ब्रो? यार ये सीक्रेट नॉलेज है, ऐसे नहीं दी जाती. ऐसे में बताने लगा तो पैसे लगते हैं उसके. 2 घंटे गेंशिन हैक करने की नॉलेज के पैसे लगते हैं. ऊपर मेरा पेटीएम और फ़ोनपे का नंबर है. चलो यार, वैसे वर्ल्ड क्वेस्ट ही बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ल्ड क्वेस्ट अभी मेरे पास इकट्ठी हुई पड़ी हैं. इनको भी करना पड़ेगा. आई स्लेप्ट एट 10 आफ्टर प्लेइंग गेम्स. अच्छा चलो यार, सी यू गाइज. आज रात को, आज तो पक्का आऊँगा रात को, ठीक है ना. 8 या 8:30 के बीच में आई विल कम ऑनलाइन और वो गेम खेलेंगे. टेल मी वाई. स्टोरी बेस्ड गेम है, बहुत प्यारी स्टोरी है उसकी, जैसे कि मैंने सुनने में आया. मैं उसका अभी एक पार्टी खेला स्टार्टिंग में थोड़ा सा खेला था, ठीक है. एंड स्टोरी बेस्ड गेम, तो अपना मज़ा आएगा खेलने में, ठीक है. देखते हैं, स्टोरी बेस्ड गेम्स को भी देखेंगे, ठीक है. चलो फिर यार, मिलता हूँ तुम सबसे रात को. टेक केयर, बाय बाय. I'll pop up for 30 minutes during break. Okay, see you. Sayonara.
It's out of my hands. You can never take away the power of my soul. It's out of my hands, but I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away the power of my soul. It's